Hello, everyone. Welcome to Ash Talks Football. Welcome to Friday stream. I know मैंने 15 मिनट delay रखा because I was in Darshan channel. I had to go there quickly. United के बारे में बात करने के लिए, but I am back. Ankit bhai, Almighty Blues is also gonna join us soon. We're gonna discuss a lot of topics. Chelsea के बारे में आज बात करेंगे. United के बारे में भी बातें होंगी. Spurs के बारे में भी बातें होंगी. Newcastle के बारे में बात होगी. Lot of things are going on in the transfer window, guys. So hope you're all doing well. Fantastic. It's going to be a fantastic stream again. Back to back streams on Ash Talks Football, guys. कल भी stream की थी, आज भी stream होगा. Saturday को watch along है, Sunday को भी watch along है. Liverpool versus Arsenal. Monday को भी Premier League review stream होने वाला है, and it's going to be a fantastic 5 days at Ash Talks Football. Different guests are going to join as well, but definitely the energy is high. Thank you so much for joining, everyone. Discord लिंक मैंने पिन कर दिया है. डेफिनेटली डू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, राइट? रुपेश इज हियर. ऑलवेज अप्रिशिएट यू जॉइन मैन. एब्सोल्युटली. लुक हु इज हियर भाई. ये देखो वो आ गया. आप आ गए भाई. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मिस्टेक. I'm all good. I'm very happy. कल का stream was so good. Fantastic stream, guys. अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, people even after the live finished have actually gone on to watch that stream completely. उसमें बढ़िया watch hours आए हैं. I'm so happy with that stream. I think it was a heartfelt stream that we all did. Frustrations bhi nikali, but also talked about why we were frustrated as well. I think it was a fantastic stream kal, but aaj bhi baat karenge. And today I think Ankit bhai ki frustration niklegi because of all the mess up that has happened at Chelsea. आज हम लोग बहुत सारा चीज के बारे में बात करें. Definitely we will take all comments आज, ठीक है? Aniket is here. Yes, thank you so much. Appreciate you joined yesterday for the stream as well. Dhruv is here as well. Fantastic. Call लाला और सूरज के साथ मंडे को स्ट्रीम होने वाला है. फुल फ्लेजेड स्ट्रीम, कंप्लीट फुल फ्लेजेड स्ट्रीम होने वाला है. सो डू चाइम इन. उसमें फुल बैंटर होने वाला है उस दिन. सो सूरज एंड लाला विल बी हियर. एक तो गेम्स भी खत्म होगी तो विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. आर्सेनल वाले गेम के ऊपर भी. सो विल डेफिनेटली मंडे को स्ट्रीम है विद लाला एंड सूरज. सो डेफिनेटली डू join in uspe. Yes, Levi is here. Absolutely, man. Always appreciate you join. Bhaiya, if Amorim fails, it will be on Ineos because everyone knows how much demanding and heavy investment need. Absolutely, it is. And मैंने question किया था ना कल इनके इस बारे में. Like there are pieces to the blame that are what's going on exactly with United. Players, management, Ineos कुछ हद तक as well because they had to back Amorim in the transfer market. But I think finally, maybe just maybe in the final moment something might happen because Garnacho deal भी complete हो गई है. Hojlund भी complete होने वाला है. Sancho और Anthony कहीं नहीं जा रहा है. I don't think so. Hopefully we might get just one midfielder somehow in the transfer market. So let's see भाई. Let's see. We'll talk about a lot of topics today. सबका chat लेंगे. अंकित भाई भी आने वाले हैं, so it'll be fun. Swam is here, bhai. Thank you so much again. Always appreciate. Crazy Me is also here. Thank you so much. Thank you so much. मैनू को आजादी दो ऐश भाई. हसीब इज हियर भाई. कहां आजादी दे? बार्सिलोना चाहती है क्या मैनू को? I don't want Kobbie Mainoo to leave. There is absolutely no reasons for Kobbie Mainoo to leave Man United, even for a loan. But I understand. But that was a fan in me speaking it. But from a player perspective, Thomas Tuchel बोल दिया आज इंटरव्यू पे, राइट? There were reasons why Kobbie Mainoo was not selected as well because he did not get enough game time. And इस सीजन बहुत सारे प्लेयर्स को इंग्लैंड स्पॉट के लिए फाइट करना है. रैशफोर्ड हो गए, ग्रीलिश हो गए, मेनू हो गए. So many other players are absolutely gunning for that England spot. So they have a point to prove, and I understand why Mainoo wants to go on a leave as well, right? Tracy is here. Let's go, bhai. Fabrizio Muslimano. Absolutely. Thank you so much, Fabrizio Clone, Regen, whatever I want to call you. Hope you've liked the stream. Hope you have subscribed to the channel as well. People voting on Woltemade overrated probably haven't watched him week in, week out. Woltemade is a good player, but I think people are actually quoting that price valuation alongside the ability of the player. I mean, it's a fluid player, not the most exciting to watch, but does the job on a day-to-day basis, but has a very good touch, very good balance as well. Woltemade, but price, I think Newcastle really overpaid. Overrated player hai, I do not know. I really do not know. Considering what United transfers have gone on, I cannot rate any player at this point. Honestly speaking, every transfer is a gamble, bhai. Every transfer is a gamble, but we'll talk about it in detail. I guess I have missed a few streams. What's happening, by the way? Yes, you did. It's okay. Kal we did an Amorim rant stream, तो आप उसको जाके देखिए. It was a fantastic stream once again. Monday को भी एक stream किया था around
the Fulham review as well. We did a lot of watch alongs as well. Videos next week से आने वाले हैं और I'm preparing some really good videos for you guys. So stay tuned on that. But yeah, ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे. विल टॉक अ लॉट अबाउट द ट्रांसफर्स. मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई है. अंकित भाई आएंगे तो विल टॉक अबाउट इट. कल वॉच अलोंग एब्सोल्युटली मैन यूनाइटेड वॉच अलोंग्स विल नेवर बी मिस्ड ऑन एश टॉक्स फुटबॉल. इट विल ऑलवेज हैपन. इट इज अ गिवन. थॉट्स ऑन द हॉयलैंड कमेंट आई गेव. हॉयलैंड वाला अच्छा ट्विटर अगर है तो फिर से डाल दो तो आई कैन शो इट टू द पीपल एज वेल, राइट? Because after moving on from the frustration, I have thought logically about this. Okay, fair. What did you think? Krishanu is here as well. Absolutely appreciate you join always, man. Maybe some did, but some are saying for the price ain't justified like me. Fair. The price point is exactly what people are questioning at this point. ऐसे तो even Ekitike had bad numbers, but he proved in the Premier League. Bhai, 2 games mein he was decent. He was not the best. I know he scored the goals and assists, but that was a good start, I would say. Adapting to the Premier League is not easy. Uspe he really gave some numbers, which is fantastic. 16 people watching, guys. Like kar do stream. Again, yesterday we reached more than 50 likes, right? Aaj bhi 50 likes ke upar hone chahiye. Do like the stream, guys. It helps me, my channel to grow. Hopefully, how with whatever that's going on, agar ye aisi chalti rahi, in the next week or so, we are gonna get monetized, bhai. Jaldi memberships be open karenge. Do chime in, bhai. Do like the stream. Rashford gets a call for England. He definitely does. So that this is where I've been saying Rashford going out on loan or going away from Man United is actually going to do him good, because he was very good in the last World Cup as well, but he was snubbed against France, if you remember. Right? He had scored like 5 goals in that tournament, was one of the top scorers, but was snubbed when he had to play by Southgate. So I think he has a point to prove as well. I think if Rashford gets more minutes and good goals, I think he will really at least be on the bench at least for England. But he has looked really good. Woltemade is a hybrid of Weghorst and Xerxes because he also he definitely lacks pace. He's definitely not as pacey as Isak, I would say, but he has more control, more guile, has more intelligence and more IQ, in my opinion. Not more, but he has that in him. Why Newcastle absolutely went for him? Because their scouts believed in it, and also the fact that Bayern was also going for him as well. So player mein dum to hai, right? But it all needs to come because they need a striker desperately. I think that was, in my opinion, and we'll talk about it. It looks like a desperate move, by panic buy, absolutely desperation move. As desperation move, we'll talk about it in detail, Aj bhai. Stuttgart wanted 65 million, for the desperate situation. They milked it, bhai. They milked. When I saw that price for Woltemade, I was like, bro, if we got Sheshko, maybe a bit more proven than Woltemade in the Bundesliga, that was a bargain in whatever going on in the transfer market. But having seen Sesko in the last 2 weeks, he needs time, man. He really needs time. Xavi to Spurs, Loki pulled a great signing. We're going to talk about it. And Ankit Bhai is going to join. Uspe we'll talk about. I think he has some strong opinions of what exactly happened with Chelsea as well. Hello, Bhai. Absolutely, yes. I hope you're doing well as well. Thoughts on Amorim's presser today? So I saw the clip of that Amorim presser. I need to go and check in detail, in my opinion. But it's my point of view is this, that he needs to be more calm. He needs to be more calm as a manager, right? Even on the touchline, dugout, your training pitch, right? Even in press conferences, don't contradict yourself 1,000 times. Like, I know you're an emotional guy, but as a manager of such a huge club, you need to just hold your horses a bit. Like, just calm down. Calm the fuck down, man. That's what I feel. I think if that the interview he gave absolutely rattled all United fans, and where absolute United fans were like, okay, he might just leave, right? Even if half of the fans want him and half of the fans do not. It's an unstable situation of any manager speaking like that, and in the presser as well. It creates some unnecessary anxiety that we do not need, a team which is trying to grow. Metal is here, bhai. Thank you so much. Hope you're doing well as well. I thought about the investment needed for the system to work, especially in the previous winter market. That's what I mentioned, na. January, अगर हम लोग को पता था कि January से we had to work on these deals, right? तो उस पे why we did not work out is something that definitely. भाई look who's here, भाई. Look who's here. I'm gonna change the layout. Let's go, भाई. Let's go. Ankit भाई is here. Chelsea. सॉरी लेट हो गया. और बोलो यार, मतलब मैं तो
क्या ही बोलो यार, मतलब आज तो इतना सारा चीज हो रहा है ना, व्हाट आर वी डिस्कसिंग, ये बोलो पहले। बहुत कुछ हो रहा है ट्रांसफर मार्केट में। सो अभी मैं एक एक करके अभी चैट ले रहा था डेडलाइन डे बिफोर वाली वी फीलिंग जॉइंड नहीं इन। आ रही जल्दी? अर्ली डेडलाइन डे वाली फीलिंग आ रही है भाई आज? बहुत अर्ली डेडलाइन है, डेडलाइन डे वाली भी करेंगे एक्सट्रीम। इफ यू थिंक, आई थिंक वी शुड डू इट भाई। मंडे को मेरा फ्री भी है तो करते हैं उस दिन। एंड बट इट्स गोना बी इनसेन बिकॉज 2-3 दिन में बहुत कुछ पलट सकता है। All the predictions, all the previews that game week का हो चुका है, not even game week, the Premier League, it will change once this transfer window बिल्कुल। unfolds on deadline day भाई। ये वाला chat लेता हूँ, फिर we'll quickly jump into what I'm going to discuss with you today because what has happened at Chelsea needs to be discussed. अनिकेत आप बोल रहे थे कि I thought about the investment needed for the system to work, especially in the previous winter market. मैं कल की स्ट्रीम पे with Nathan we were talking about it, right? एंड मैंने ये पॉइंट रखी थी अंकित भाई, राइट, कि अगर आप लोग को इन इन एमोरिम एज अ मैनेजर इफ यू रियलाइज्ड कि अगर आप लोग को मिडफील्डर चाहिए था, यू हैड फ्रॉम जनवरी टिल अगस्त टू फिगर इट आउट। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट भाई। एंड नाउ वी आर स्कैम्परिंग अराउंड फॉर अ मिडफील्डर इन द नेक्स्ट 2-3 days। तो बहुत लोग इस पे मेरे से कॉन्ट्रडिक्ट किए कि नहीं उसको प्लेयर्स नहीं मिले, बैक नहीं मिले। अरे बैक इट्स फाइन नहीं मिले, बट लॉट ऑफ द टॉप क्लब्स एक्चुअली नेगोशिएट डील्स वे अर्लियर टू इंटीग्रेट योर स्क्वाड टू प्री सीजन। अपने पास टाइम था, दे हैड अ प्लान, और राइट? सरप्राइजिंग बिट ये है ना कि एमोरिम इज नॉट द काइंड ऑफ मैनेजर जो बोर्ड के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि आप मतलब फेमसली बॉम्ब स्क्वाड हमें पता ही है, तो वो क्लियर है। तो राइट। वंस ही हैज द अथॉरिटी, सो कॉल्ड, राइट, अगर करेक्ट। आपके पास है वो अथॉरिटी, तो या तो आप पूरा यूज करो, ठीक है, या तो आप बोलो कि यार बोर्ड ऐसा कर रही है, हम उसके हिसाब से जा रहे हैं, देयर इज अ प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस वाला, जो ऑब्वियसली क्लब्स लाइक अस आर फेसिंग राइट इन द राइट। लास्ट राइट। फ्यू इयर्स। तो इट इज वेरी वियर्ड, और इसलिए मैं तो भाई गोइंग बैक टू द सेम कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे थे, हाँ। अभी जो हुआ है लास्ट 2-3 दिनों में, आई एम इवन मोर क्लियर कि एमरम इजंट क्लियर। उसको उसको टैक्टिकली क्लियर नहीं है वो इस टीम के साथ क्या करने वो वाला है। क्लैरिटी है मतलब सबसे पहला चीज आप क्या करते हो, आप अगर एक यंग मैनेजर हो गोइंग टू न्यू क्लब एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली द मीडिया, सेकेंडली द फैन बेस, राइट, एंड द प्रेशर, ठीक है, पीपल लाइक अंडररेटेड प्लेयर्स ऐसे अवेलेबल है जो अपने फेब्रिशो, अपने देसी फेब्रिशो बोल रहे इन द राइट। हाउस, बट इवन मैं तो बोलता हूँ व्हाई सो फार अपना, आप जब जब थिंग्स आर बैड, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड इन लाइफ, जनरली इट्स वेरी राइट। नॉर्मल क्वेश्चन, राइट। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो whom do you go to? You go to your loved ones, you go to the friends and family generally first up, राइट। ठीक है। उसका क्या है, पीपल हु हैव प्लेड अंडर हिम एंड हु नो हिम लाइक एनीथिंग। राइट। अभी तक लिंक्स ही आ रहे ह्यूलमंड के, डेडलाइन डे आ रहा है, मैं सबसे पहला दिन आपसे बात हुई थी, मैं ह्यूलमंड का नाम लिया था, आपको याद है तो? हम मैंने भी किया हुआ था हुइलमेंट का नाम इट कितने वाज टाइम पे, वेरी अगर आप सरप्राइजिंग दैट you ही डिडंट and इवन। also हाँ and अंकित भाई also a player that has played for you, proven in that pivot system जो दैट्स द तुम होल खेलना पॉइंट चाहते हो। ना, एग्जैक्टली। तो आपको ना, आपको बताना नहीं पड़ेगा कैसे आप खेलोगे, आपको ये इवन इफ से फॉर एग्जांपल ही स्ट्रेस्ड एंड इज नॉट एबल टू मैनेज वेल, ह्यूलमंड विल अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट लिटिल बिट मोर देन अदर्स। प्लस लीडरशिप। ह्यूलमंड के लिए एक, अगेन इट वुड हैव बीन एक एक जंप फॉर श्योर, जैसे उगाटे के लिए राइट। था कमिंग टू द प्रीमियर लीग, राइट। तो आप ऑल एग्स इन वन बास्केट अभी कर रहे हो, क्यों? रीजन इज क्योंकि आपका ये हवा बना हुआ है। अगेन आई मस्ट से that राइट। you are basically, I know excitement थी in terms of Mbomo, in terms of Cunha, in terms of Sesko, but I would still go back to say कि यार like you said कि यार midfielder आपका पहला important प्रायोरिटी factor था। था, एंड इवन विंग बैक, goalkeeper next। इवन राइट विंग बैक भाई अंकित भाई, लास्ट सीजन तो आपको अगर पता है कि यू आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन विद मजरावी मे बी इंजर्ड पोटेंशियली, नॉट अ राइट विंग बैक इन एसेंस, डालो इनकंसिस्टेंट, अमाद नॉट फिजिकल एनफ टू प्ले इन दैट रोल। मैं वही बोला कल ना कि यूनाइटेड फैंस ने काफी फैंटेसाइज और सेंसेशनलाइज किया इस चीज को कि एम्बूमो एंड अमाद खेल पाएंगे इन द 10 एंड द राइट विंग बैक सिचुएशन। नहीं होता। इट डजंट वो फुटबॉल डजंट वर्क लाइक दैट। यू नीड स्पेशलिस्ट इन योर रोल। हम हर जगह ऐसे मेकशिफ्ट प्लेयर्स, एंड नेथन और मैंने कल यही भी बोला, राइट, प्लेयर्स वर प्लेइंग, एवरी प्लेयर इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। ब्रूनो प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, एम्बूमो पता नहीं वो राइट विंगर अभी 10 पे खेल रहा है, अमाद No, राइट I विंगर don't राइट विंग बैक पे understand, खेल रहा आप बोलो, इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन, है। राइट। आप लोग को दिख रहा है क्लियरली कि देयर आर सर्टेन प्लेयर्स हु डू नॉट फिट दिस सिस्टम, तो या तो आप प्लेयर्स को लाओ या तो आप सिस्टम को चेंज करो अप अंटिल यू गेट द प्लेयर्स। राइट। ऐसा कौन सा रूल है फुटबॉल में
कि माई वे ऑफ द हाईवे ही है, मतलब यू कैन डू माई वे ऑफ द हाईवे इफ यू हैव अचीव्ड इन इंग्लिश प्रीमियर लीग द वे राइट दैट पेप हैज, द वे दैट क्लॉप हैज, द वे दैट मोरिनियो हैज इन द पास्ट, द वे दैट फर्गसन हैज, राइट? ऑब्वियसली लेजेंड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट इवन एन एंटोनियो कॉन्टे जो नया था इन द प्रीमियर लीग, वो समझ गया कि देर आर सर्टन ड्रॉबैक्स, देर आर सर्टन मतलब लिमिटेशंस ऑफ अ टीम, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। थॉमस राइट राइट टूकल फेमसली, राइट? तो ऐसा नहीं है, मतलब थॉमस फ्रैंक अब देख रहे हैं, राइट? आप देखो टैक्टिकली ही इज सो फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं राइट बोल रहे कि आप कंफ्यूज करा दो स्क्वाड को। एग्जैक्टली देखो आपके पास उतने ही मैचेस है, आपके पास नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द कैरेबाओ कप, सॉरी टू रिमाइंड यू, बट और भी कम है। तो या नाउ इट्स इवन मोर द फैक्ट कि अगर आप इतने प्रेडिक्टेबल हो जाओगे, एवरी टीम लिटरली नोज आपका ब्लूप्रिंट कैसे बीट करना मैनचेस्टर यूनाइटेड को। and players, not even like managers, players आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं कि डाइसेक्ट कर रहे हैं टैक्टिक्स. हु आर दे टू डाइसेक्ट द टैक्टिक्स ऑफ मैन यूनाइटेड? ये एम्बैरेसिंग है. दिस शुड नॉट बी इवन टेकन. दिस शुड बी टेकन बाय हार्ट एंड यू नीड टू अडेप्ट एंड फिक्स दैट कि कोई आपका मैनेजर आके अपने घर पे, आपके घर पे आपकी टैक्टिक्स ना तोड़ पाए. दिस इज मोर ऑफ एन प्राइड सिचुएशन. बट विल डेफिनेटली जंप इनटू द चेल्सी टॉपिक. आई विल टेक सम चैट्स, उसके बाद डायरेक्टली जंप करते हैं, ठीक है ना अंकित भाई? गेटिंग बिल्कुल बिल्कुल। Jorgen Strand Larson for 65 would have been better, but Wolves ने मना कर दिया, सेल नहीं करेंगे. अभी अभी साइन किया उन लोगों ने. Wolves ने मना कर दिया. I know talks थे, but नहीं हो सकता. It's not about United, it's about the Newcastle thing. And Newcastle के लिए Strand Larson would have been good, but वो सेल नहीं करते यार. Supradeep is नहीं, here. वुड ही He's हैव, a ये आई नो ऑफ टॉपिक है थोड़ा, मतलब सॉरी हाँ टू कट इन, लेकिन हाँ मैं तो वही दर्शन से भी वही बात कर रहा था अभी, दैट गाइस आप लोग भी बोलो चैट में, आई वुड लव टू नो योर थॉट्स, क्योंकि exactly. मेरा तो ओपिनियन, मैं तो बोल के थक गया, मतलब दिस पॉइंट इफ आई से मोर आई एम लाइक चलो इसको बंद करो भाई। अगर आपको 80 मिलियन स्पेंड करना पड़ रहा है फॉर एनी क्वालिटी, बट एंड अगेन उसने अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एवरीवेयर दैट इज प्लेइंग इन द Right. लास्ट 1 ईयर, बट वो लास्ट 6 to 12 months भाई, इवन निकोलस जैक्सन ने किया था बिफोर वी गॉट हिम फ्रॉम विलारियल, and he took his own time, ठीक है? डार्विन नूनेज एट बेनफिका डिड सो वेल, he took his own time. उसके अलावा ये नहीं कि आपको जल्दी जाना, निकोलस जैक्सन अवेलेबल था 65 मिलियन पाउंड में, डार्विन नूनेज वाज अवेलेबल फॉर अराउंड द सेम Maybe अमाउंट। potentially lesser. 60 तक भी जा सकता था maybe. हाँ 60 मिलियन Jackson. पाउंड में भी आ जाता, ऑल्दो मैं नहीं चाहता था कि न्यूकासल जाए, दैट और वाज अ बंदा डिफरेंट प्रीमियर लीग पॉइंट। में खेला भी है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट इज एक ईगो ट्रिपर है न्यूकासल के न्यूकासल ईगो ट्रिपर. ये डायरेक्टर्स। तो डेस्परेट मूव है, उस पर बात करेंगे डिटेल में. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एंड मैं उसको लिंक कराऊंगा टुवर्ड्स इसाक एज वेल, तो उस पर भी बात करेंगे. राइट राइट। Supradeep is a Bayern Munich fan, so वो बोल रहे हैं कि Woltemade won't disappointed. He's a little bit slow striker as compared to others, but he won't disappoint. Yes, प्लेयर अच्छा है, आपको वो लिंक अप दे सकता है, वो इंटेलिजेंट है, बट वो एक्साइटमेंट, वो पेस, वो डेडलीनेस, वो इजैक वाली जो थी, वो आपको नहीं दे सकता नहीं है। वोल्टेमाडे. आई डोंट थिंक सो. राइट. चैट लेते हैं फटाफट. विल डंप इनटू टॉपिक. वी गेट द मोस्ट पोटेंशियल स्ट्राइकर फ्रॉम बुंडेसलीगा एट द लीस्ट प्राइस, बट लेट्स सी. फेयर फेयर फेयर. Those two clutch goals against West Ham of Larson to win the game are pure striker finishes, pure poacher. He did well alongside. I think Cunha के साथ भी उसकी लिंक अप अच्छी थी ना कि भाई, with whatever they did, basically नहीं they नहीं, finished lower, but he हाँ was one of the bright spots for Wolves last season. unanimously सारे क्रिएटर से लेके फैन से लेके अग्री करते हैं कि स्टैन लार्सन इज अ 100%। वेरी गुड प्लेयर. राइट. बिल्कुल। है ना? डू यू देयर विल बी एनी चेंजेस इन टैक्टिक्स टुमारो? यूनाइटेड, मैं तो अभी दर्शन के स्ट्रीम पे वही बोल के आया. मैं सेम फुलम वाली लाइनअप खेलने वाली है कल गाइस. मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शन अगर मैं गलत हुआ, इट्स ओके, आई विल बी हैप्पी. बट मैं जानता हूँ कि ये सेम लाइनअप होने वाला. माउंट स्टार्ट करेगा, शेस्को विल बी ऑन द बेंच. ये होने वाला है कल भाई. क्रेजी ना, लेकिन सच सच है, लेकिन क्रेजी है इवन टू थिंक ऑफ इट। आप सोचो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. क्या बस एब्सोल्युटली. अंकित भाई इज फैंटास्टिक भाई. ऑलवेज हैप्पी टू हैव हिम हियर. Ankit bhai, I wanted to thank you club to sign. We'll talk about it, bhai. We'll talk about this. I'm so happy this happened, right? Drama unfolds on deadline day. Yes, definitely. Um, in the Nathan Bhai stream, I highlighted that Ahmad struggled physically as a 10, then he's facing a problem as a wingback, and I don't know what will happen to exactly. मैंने ये चीज कितनी बार बोली है निकेत, and अंकित भाई आप भी इस चीज पे you यंग kindly प्लेयर्स को इतना भी आपको मूव नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक एग्जांपल ऑल्दो डिफरेंट प्रोफाइल का है, क्योंकि हम चेल्सी की right. ओर जा रहे हैं, इस मालो गुस्तो आपको याद है तो पोचेटिनो के अंडर अच्छा किया था काफी, ऑल्दो एज अ प्रॉपर फुल बैक जो ओवरलैप कर रहा था, Right. अभी अंडरलैप करना शुरू किया था ना लास्ट सीजन, सो ही वाज इन टू माइंड, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद अमाद। ही डजंट नो बेसिकली व्हाट इज डूइंग, उसकी पोजिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज नॉट क्लियर, और अदर इवन इफ ही इज बीइंग टोल्ड, ये हम ब्लेम नहीं कर रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोचिंग स्टाफ को,
एज अ यंग प्लेयर आप एक चीज करते आ रहे हो, समथिंग गुड एट विच इज वर्किंग फॉर यू, व्हाई चेंज दैट? दैट्स द होल आइडिया. एंड मेरा हमेशा से ये, मैं लास्ट सीजन से बोलते आ रहा हूँ, आई नो अमाद हैड अ स्ट्रिंग ऑफ गुड रन्स इवन अंडर टेन हैग एंड एवरीवन, बट वो फिजिकली रेडी नहीं है टू प्ले एवरी वीक. लोगों ने उसको ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है कि ही इज वर्ल्ड क्लास, एंड वो पोटेंशियली वर्ल्ड क्लास हो सकता है, बट उसकी एक दो दो 1.5 सीजन से हुए उसको खेलते हुए टॉप लेवल पे कंसिस्टेंटली. उसके पहले सीजन वो इंजर्ड भी था, तो बेसिकली दैट वाज हिज ब्रेकआउट I सीजन इन think द wing प्रीमियर back लीग. requires more work rate though. I think अगर उसको एग्जैक्टली. बोला जाए कि you are our R10, I think he could do that role. लेकिन ठीक है, मतलब putting all the eggs in one basket ये भी सही नहीं है, I get that. लेकिन मैं राइट. ये बोल रहा हूँ कि at the end of the day आपकी जो clarity of thought नहीं आ रही ना, वो दिख रहा है पिच पर. Absolutely, absolutely. Last year, everyone was saying Prem is losing the charm. Now, post this window, the teams look stacked with talents. Not only big six, even teams like Castle, Palace, Villa. I mean, मैं वो बोला ना, इस बार लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, ठीक है, सिटी, किसी को भी ना इजी गेम्स नहीं मिलने वाले अंकित भाई इस साल. एवरी गेम विल बी टफ. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन एवरी गेम. चेल्सी फुलम भी मैं तो बोला डाउटफुल है. अगर चेल्सी नहीं, इफेक्टिव नहीं चेल्सी रही. फुलम तो नॉर्मल सीजन में ही इट इज अ बिग बनाना स्किन, क्योंकि डार्बी है, नियरेस्ट नेबर्स है, पीपल ऑब्वियसली फॉलो चेल्सी फुलम क्लोजली, नो इट. राइट. लेकिन ये अंडररेटेड डार्बी है, मैं हमेशा बोलता हूँ इट बी डिफिकल्ट. बट वही है ना, आज तो मुझे लगता है ट्रांसफर्स का जो हो रहा है, नो फैंस पर तो बहुत निर्भर होता है बेस्ड ऑन द मूड एक्सेट्रा. लेकिन मैच पर कितना निर्भर होगा देखा जाएगा, मतलब लास्ट गेम बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक है. बट राइट. आई थिंक ये वाला जो चीज है ना, मतलब अभी लग रहा है आफ्टर जो कांड हुआ है जावी सिमंस और फकुंडो का, बेसिकली जो वो हुआ है उसके बाद तो लग रहा है गार्नाचो इज अ ग्रेट डील. इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ स्टील. इट्स अ स्टील, राइट? अभी अभी ऑल ऑफ अ सडन वो सिनारियो चेंज हो गया. मैंने आज 2 वीडियो डाली, एक गर्नाचो में आई एक्चुअली स्पोक पॉजिटिव, क्योंकि मुझे दिख रहा था दूसरे डील में क्या हो रहा है. तो आई एम लाइक ओके चलो भाई, ये वो दे रहा है जो वहां पर मिसिंग है हमारी लिंक, एंड मे बी गार्नाचो इज दैट आंसर. देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको आज के दिन में मिल रहा है एक बंदा जो खेला है 2 full seasons ऑफ द प्रीमियर लीग, राइट, एटलीस्ट, एंड वो स्कोर्ड यू द नंबर ऑफ गोल्स एंड असिस्ट दैट इज गॉट, राइट. और वो 21 years ऑफ एज है, ठीक राइट. है, और वो आपका सॉल्व करता है विंग का इश्यू के बैकअप, और रादर स्टार्टिंग इवन ऑन इन सम ओकेशंस. राइट. 40 million pound गोइंग बाय टुडेज डे, आई थिंक, और बहुत अर्जेंटाइन है अलग, ही. इट्स अ स्टील, ठीक है. कौन मैन, तो 40 अगर मिलियन वैसे इज उस, नथिंग. हाँ, तो एक होता है ना पॉइंट ऑफ, मतलब आपका जो व्यू पॉइंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट इज, आप क्लियर बोल रहे हो, यस एब्सोल्युटली, ही इज ब्रिलियंट. अब प्रॉब्लम क्या है? ऑफ द फील्ड इश्यूज, एंड दैट राइट. इज द प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम ये भी है कि विल ही बी बेसिकली अ फिट फॉर चेल्सी इन टर्म्स ऑफ द टैक्टिक्स, ठीक है. अब कितनी वहां, बार बोले हम लोग. जहां तक मैं देखता हूं, देयर आर 2 issues रनिंग एट चेल्सी राइट नाउ. राइट. वन, ओवर रिलायंस होगा ऑफ पेड्रो नेटो, क्लियरली. हाँ हाँ, एब्सोल्युटली. वीक इन वीक और आउट. जो सबसे गलत चीज है, पेड्रो नेटो एज मच एज मोस्ट इम्प्रेस, मैं तो बोलता हूँ अमंग द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर्स इन लास्ट 5 months रहा है. राइट. रिसेंटली फुलम के गेम से वापस से रिवाइवल शुरू हुआ था. अब वो बंदा उसके बाद में बस खेला है, लिटरली ऑलमोस्ट एवरी मिनट ऑफ एवरी गेम खेला है इन मल्टीपल कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्रेंस लीग, प्रीमियर लीग, एंड ऑफ कोर्स फेमसली क्लब वर्ल्ड कप. राइट. राइट. लेकिन पेड्रो नेटो is someone who had injuries in the past. He's known for injuries or infamous for injuries. Eventually it will catch up in a busy year, जो हमारा रहा है. डेफिनेटली. डेफिनेटली. फिर एस्तबाओ को आप टाइम नहीं दे रहे हो. एस्तबाओ ऑब्वियसली, पोल पामर ऑलरेडी इंजर्ड, ठीक है. अब वहां पर आपको चाहिए स्टार्टर. अब चेल्सी के सिस्टम में, क्योंकि हम जनरली खेलते हैं अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, अगेंस्ट अस बिकम लो टू मिड ब्लॉक, क्योंकि दैट्स द वे राइट. टू स्टॉप चेल्सी इजीली. हम पोजीशन बेस्ड खेलेंगे. एब्सोल्युटली. वहां पर यू नीड समवन जो डायरेक्ट वन ऑन वन ड्रिबल करे, हु बीट्स प्लेयर्स. Again, Sancho in that ability alone was better than Garnacho in my personal opinion. In that, कंट्रोल, बट थोड़ा सा कंट्रोल, yeah, नथिंग फ्लैशी, बट एटलीस्ट यूज्ड टू correct. समहाउ उसका टीम एक कंट्रोल. एबिलिटी था. प्रॉब्लम थी सैंचो की, वो एक ही चीज करता था, दूसरा चीज वो भूल जाता था कि कर पाता है, ठीक है. राइट. गिटन्स का सेम है, तो गिटन्स एंड सैंचो कंपेरेबल इन दैट मैनर. और गिटन्स तो आई बाई, चलो ठीक है, टाइम लगेगा बट आई बाई. ठीक है. गर्नाचो के केस में आई थिंक ही इज मोर इफेक्टिव कमिंग ऑफ द बेंच इन दैट सिनेरियो, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके फॉर श्योर. काउंटर्स में ऑपोजिशन विल ट्राई टू काइंड ऑफ स्कोर, एंड दैट्स वेयर दैट स्पेस इन बिहाइंड ही कुड यूटिलाइज इवन मोर. और प्लस इज अ शॉट टेकर, ब्रिलियंट दैट, आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, ठीक है. वो चाहिए हमें एज अ टीम, वी लैक दैट. अब राइट. इश्यू ये भी है कि वी गो 3-4-2-1. अब उसमें
हाउ वुड ही डू, मतलब क्या गार्नाचो इज दैट गाय, जैसे गिटन्स बहुत ही हम्बल बंदा है जो वापस आकर ट्रैक बैक करता है, गार्नाचो बुरा नहीं है, उसके बॉल रिकवरीज आर गुड, बट दैट्स व्हेन ही लूजेस पोजीशन. Yeah, तो इज ही absolutely. दैट गाय जो डिफेंड फ्रॉम द फ्रंट, राइट, एंड टेक्स ऑन पीपल वन ऑन वन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा है, स्पेशली क्योंकि लास्ट 2 महीने में तो खेला ही नहीं है फुटबॉल, लास्ट फ्यू मंथ्स में स्टार्ट ही नहीं किया है. तो दैट वही इज ना. एन इश्यू फॉर मी. इट टेक टाइम. सो अभी के लिए नेटो, इफ ही स्टेज फिट, दिस इज अ फैंटास्टिक साइनिंग, क्योंकि दैट विल गिव टाइम टू, से फॉर एग्जांपल अ गिटन्स और Right. एस्तेवा. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है नेटो को, देन इट्स अ मेजर इशू. एंड मेरे लिए ये चीज है कि इस टाइम पे गर्नाचो वाला सिचुएशन ये है कि ही हैज नॉट प्लेड अ फुल प्री सीजन. टीम के बाहर से उसने ट्रेन करी है, कितना फिट है, कैन ही कम इन एज इवन इवन एज इम्पैक्ट प्लेयर, क्या वो इम्पैक्ट आपको देगा? आई डोंट थिंक सो. नोइंग मरेस्का, आई थिंक इट्स गुड टाइम कंसिडरिंग इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है. गर्नाचो इंटरनेशनल टीम पे है नहीं, राइट? तो इस टाइम पे आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी की आई थिंक गर्नाचो विल जस्ट ट्रेन अलोंग विद द स्क्वाड जितने भी हैं, इंटीग्रेट इन टीम. आई थिंक इसको 1-2 हफ्ते बाद हम लोग शायद देख सकते हैं एट चेल्सी. बट भाई लेकिन मरेस्का ने आज ही बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है खुद भी. तो क्या ही क्या ही नीड्स तो टू. बोले. या मतलब वो एक और इशू है ना चेल्सी का, क्योंकि वी बीन सो बिजी. लेकिन देखो, एट द एंड ऑफ द डे, देखो गर्नाचो एक पीआर का एक अलग ही चीज होता है, लेकिन आई थिंक ऑन द पिच, आई थिंक नो वन कैन टेल ही इज अ टेरिबल साइनिंग. बट वो ये, आप एक प्रॉब्लम को न्योता दियो, अब वो राइट. प्रॉब्लम को अगर मैनेज सही करो, देन यू हैव अ प्लेयर इन दैट. राइट. अब चेल्सी फैंस ना बहुत बहुत बेल्ट डाउन शुरू हो रहा है गर्नाचो के केस में. बाकी तो हो रहा ही है, वो तो मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ अपने आप राइट. को. लेकिन गर्नाचो के केस में हो रहा है वो, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ओवर रिएक्शन हो रहा है. आई थिंक रीजन बीइंग, क्योंकि नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे ना. हाँ. कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमें एक पनिशमेंट मिला यूएफए से. वी हैव गॉट हाँ. अ हाँ. पनिशमेंट दैट वी यस कैन यस, यूज आई ओनली द रिमेम्बर. प्रॉफिट ऑफ द नॉकआउट स्टेज ऑफ लास्ट ईयर यूएफए कॉम्पिटिशन, रजिस्टर्ड प्लेयर्स. हाँ. तो टू रजिस्टर न्यू प्लेयर्स. अब भाई बाकी लोग नहीं आ रहे भाई 40 मिलियन में, गर्नाचो आ रहा था. दैट्स द होल पॉइंट व्हाई वी वेंट फॉर गर्नाचो. अगर राइट. आपको राइट. एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग विंगर मिल रहा है इन 40 मिलियन विद लेस वेजेस, यू कुड शो दैट. मतलब यू ऑब्वियसली, अगर आइडियली चाहो तो मैं तो लुइस डियाज चाह रहा था भाई. एक तो वो आता नहीं, और लुइस डियाज 40 मिलियन में तो भाई सपनों में भी नहीं आता. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो कॉन्टेक्स्ट आई थिंक लोगों को समझना भी जरूरी है कि एट दिस प्राइस पॉइंट, मैं तो ऑब्वियसली एज यूनाइटेड फैंस में बोल रहा था कि 50 मिलियन एज द आइडियल गार्नाचो प्राइस कंसिडरिंग. बट अच्छा हुआ कि वी हैव अ 10% सलोन क्लॉज, एंड 40 मिलियन करंटली विद व्हाट्स हैपनिंग विद गार्नाचो इज मेकिंग सेंस फ्रॉम अ डील पीओवी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट जावी सिमंस, राइट, अभी मैं जावी सिमंस पे आऊंगा, राइट. डिड चेल्सी मेस अप भाई? डिड चेल्सी मेस दिस अप? बिकॉज ये टारगेट आपके साथ कहाँ से कितने शुरू टाइम करूं से, भाई. ये टारगेट आपसे आपके साथ कितने टाइम से लगा था. एंड पता है आपका, अगर जावी सिमोन लेके आते हैं ना, इज अ वे बेटर प्लेयर देन गार्नाचो, वे प्रूवन प्लेयर देन गार्नाचो. लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, कैम खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है. आपको आप अटैकिंग थर्ड में इस बंदे को कहीं भी डालो, he will definitely give you the energy and that X factor that Chelsea needs. Did they mess up? And मेरा ये कहना है कि did the Garnacho, and मेरा क्वेश्चन है, आई थिंक आपके वीडियो कमेंट में मैंने डाला हुआ था, did the Garnacho deal actually rattle him up? Like, you know what, I might not even get an opportunity once Palmer is back. Pedro Neto is already part of the core group. Gittins है, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास. Will this even work? तो मेरा what are you gonna talk नहीं नहीं, so about? देखो, अगेन देयर आल्सो आई बिलीव लॉट ऑफ चेल्सी फैंस इंक्लूडेड, दे आर मेसिंग अप इन इंक्लूडिंग. मतलब बेसिकली क्या है, गर्नाचो और जावी सिमंस प्लेयर्स को तो छोड़ो, इवन द फैंस आर Right. थिंकिंग कि बिकॉज ऑफ गर्नाचो हमने साइन नहीं किया जावी सिमंस. ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. एक चीज मैं बोल देता हूँ, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बट इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्राइस पॉइंट. ये प्रोफाइल ऑफ प्लेयर पर हम कंपेयर कर भी नहीं रहे. Right. प्रोफाइल ऑफ प्लेयर में आई अग्री दैट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आज के दिन में, बिकॉज ऑफ रीसेंट जो किया है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रिबलिंग, वन ऑन वंस, लो ब्लॉक के अगेंस्ट, मतलब बीइंग अ डच फैन एज वेल, हैविंग फॉलोड हिम सो क्लोजली ओवर द इयर्स, मैन्युफैक्चर्ड जावी सिमंस. मैं तो भाई देयर इज नो सीक्रेट्स, ओपनली मैंने तो सेलिब्रेट भी कर लिया था. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इट्स कम बैक बाइटिंग एट मी, बिकॉज मुझे तो क्लियर आंसर पता है, जावी सिमंस हैज टू बी द आंसर. Right. लेकिन देयर आर टू थिंग्स. वन, वी नीडेड दैट विंगर जो प्राइमरली विंगर है, who could play internal number 10 if need be, and that is Garnacho compared to Xavi Simons, who's really an internal number 10 who could play as a wing, जो हमारा ऑलरेडी था. एक बंदा था, लोग भूल रहे हैं, उसको क्रेडिट दे ही नहीं रहे, जो क्लब वर्ल्ड कप में अच्छा किया, क्रिस्टोफर एंकुंकू. Christopher Nkunku. क्रिस्टोफर एंकुंकू वाज बेसिकली जावी सिमंस का बाप इन लाइप्जिग.
if you know what I mean, from Absolutely, Leipzig's any day perspective. by and even in Champions League, Nkunku was top tier. तभी ना वो बिल्कुल। signing किया, right? अब इश्यू ये है कि ही हैज लॉस्ट हिज स्पेस, वन कैन आर्ग्यू आफ्टर द इंजरीज, या वो सर्कमस्पेक्ट है या तो वो मन से नहीं खेल रहा है। Hmm. अब क्लियरली ओपनली बोला है अपने बंदे ने, अपने एंजो मरिस्का ने, दैट कोल पामर है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट गॉट इनफ मिनट्स, ही इज अ Right, प्रॉपर प्रोफेशनल। right. जॉ फिलिक्स का ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जॉ फिलिक्स तो भाई ही वाज वेरी फ्लैशी मोर देन एनीथिंग, राइट? Nkunku एटलीस्ट ही डज थिंग्स जो मैटर, लाइक बोनमथ वाला अवे गेम। अब वो वाला चीज है ना, आप देखो तो अगर आप जावी सिमंस पर प्रायोरिटी रखते, उसका मतलब कि यू आर डायरेक्टली सेइंग कि यू वांट जावी सिमंस एज एन अपग्रेड ओवर एनकुंकू, एंड आई अग्री। एट दिस पॉइंट इन टाइम जावी सिमंस इज एन अपग्रेड ऑन एनकुंकू, ऑल्दो जावी सिमंस इज नॉट द सेम पोटेंशियल वाला बंदा जो हमें दिख रहा था लामासिया में, बट फिर भी काफी अच्छा है, राइट? बट एनकुंकू के लिए यहाँ जर्मन क्लब चिंदीगिरी शुरू कर दी थी, दैट इज द इश्यू। क्रिस्टोफर एनकुंकू डिस्पाइट हिज इंजरीज, I don't know for whatever reason. Yes, he's 27, turning 28 soon. Lekin I was shocked. Why aren't clubs willing to pay 45 million for Christopher Nkunku? Right. I was shocked, honestly speaking. लेकिन it is what it is. अब वो इंजरी का बहाना देकर it's a good, say buy for buying clubs. So वहां पर फाइनली एसी मिलान गया जावी सिमंस के लिए उसी सेम टाइम में, बिकॉज इट वाज लाइप्जिग इंटरेस्ट दिखा रही थी एनकुंकू पर, वी कुडंट गेट जावी सिमंस बिकॉज दे वर कोटिंग सो मच, एंड प्लस बाकी क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे। तो Hmm. इट्स ऑलमोस्ट सेइंग कि जावी सिमंस को हम बाय करेंगे इन द कॉस्ट, इन द मनी दैट वी मेक प्रॉफिट आउट ऑफ, रिमेंबर द यूएफा Yeah, पनिशमेंट, yeah, the UEFA फ्रॉम punishment. टू प्लेयर सेल्स, बिकॉज एनकुंकू सेल वाजंट इनफ। तो टू एक प्लेयर और सेल, सेल क्योंकि चाहिए था एज ऑफ आपको. नाउ वो ब्रेक इवन था, राइट? इनफैक्ट ब्रेक इवन में था, हम लोग -4 million में थे in terms या of फिर profit. मैं अगर कॉलवेल फिट होता तो यू माइट बी एक्चुअली लुकिंग एट मोर सेंटर बैक सेल्स एज वेल बिकॉज आपके पास हैं काफी ऑप्शंस. Badiashile is the answer. You're एडिशनल इज द right. आंसर. Badiashile खुद फिट नहीं है भाई. वो खुद फिट That's नहीं है तो the किसको answer. सेल क्योंकि करेंगे? आप, if you're not fit in the transfer market, you cannot be sold. यू कैन नॉट बी सोल्ड. 90% you won't be स्टिलर sold, भी तो इसीलिए साइन नहीं हुआ ना, वरना right? एंजेलो स्टिलर जैसा प्लेयर आपको लगता है कि अगर रियल Correct. मैड्रिड नहीं उठाती या कोई यूनाइटेड जैसे. Calvini in center back, Stiller in midfield. You're right, absolutely. तो क्या होता है ना, आप ये फैन बेसिस, आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग चाहते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज सिंपल मैथ्स। अब वो राइट. चीज चेल्सी ने की नहीं की है। आप बोल सकते हो व्हाई डिड यू ब्रिंग अ डारियो एसुगो, व्हाई डिड यू ब्रिंग अ केंड्री पाइस, वो सब मैं अग्री करता हूँ, ठीक राइट. है, लेकिन केंड्री पाइस को हम नहीं रजिस्टर करें यूसीएल में एनीवे, सो दैट डजंट काउंट। तो एग्जैक्टली. सिंपल। तो जावी सिमंस, इज ही दैट कैलिबर? अगेन, एज मच एज मैं खुद पर्सनल जावी सिमंस स्टैन हूं भाई, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, फॉलो ऑलमाइटी ब्लूज फ्रॉम इयर्स, यू विल गेट टू नो। मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूं फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड द चैनल 4.5 years बैक। दैट इज राइट. मी, जावी सिमंस। मतलब आई एम हार्ट ब्रोकन, इफ आई एम ऑनेस्ट, टोटल एब्सोल्युटली. हार्ट ब्रोकन। मतलब if anyone has seen the rant video, you will see basically I have like lost it, because या ही this लॉस्ट guy इट. is someone कंप्लीटली who, लॉस्ट इट. मैं बोल रहा हूँ ना, ये बंदा would have been the answer at number 8, number 10 on the wing, या. और प्लस ये बंदा is someone who wants to do good at a big club finally, जो राइट. चीज नहीं हुआ enough in Barca and PSG, but is he that? आज सच में बोलो, अगर जावी सिमंस, चलो स्पर्स भी जा रहा है, अच्छी बात है, अगर आप जावी सिमंस और कोल पामर को कंपेयर करो, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, राइट. मतलब इज ही गोना हैव दैट इंपैक्ट एज अ कोल पामर टू चेल्सी? सच में बोलो, स्पर्स पे. नहीं। स्पर्स पे. Is he really have that kind of impact in नो नो, Spurs what Cole वो Palmer had for इम्पैक्ट तो Chelsea? नहीं रहेगा फॉर श्योर. आई मीन कोल पामर इज कोल पामर, बट मेरा इसमें पीओवी के जावी सिमंस विल स्टार्ट वीक इन वीक आउट एट स्पर्स. हाँ, स्टार्ट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वो होता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या फ्रॉम द प्लेयर? आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ जावी सिमंस। ही इज वेरी गुड, माइंड यू, लेकिन अभी वो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में नहीं है। तो आप अगर वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में तो डालते हो जावी चेल्सी सिमंस से क्या को, एक्सपेक्टेशन थी भाई? देन हाँ, चेल्सी तो से क्या वही है ना कि एक्सपेक्टेशन? हाँ. अगर वो आता फॉर समथिंग लाइक 50 million euros, which is about 40 million pounds, या 60 million euros, which is about 50 million pounds, जो चीज हमने गिटन्स के लिए पे किया, 100% चेल्सी कुड हैव गॉन फॉर इट। क्यों? क्योंकि हम लोग टायरिक जॉर्ज से बात, रोमा से बात करें, क्योंकि सैंचो अपना फ्रीडम नहीं चाह रहा रोमा से, राइट. तो टायरिक जॉर्ज टू रोमा का बातें चल रहे थे, राइट? तो 25 million वहां से मिलता, 35 million आपका इंकुंकू से मिल रहा था ऑलरेडी, तो वो लिटरली हो जाता कि भाई दो प्लेयर का सेल्स हम यूज करते जावी सिमंस के लिए पहले। लेकिन द फैक्ट इज, द होल आइडिया इज दैट जावी सिमंस के लिए लाइप्जिग 60 million में भी नहीं मान रही थी भाई। 70 million euros is what they wanted बट अभी when the talks were एंकुंकू happening. बट अभी एंकुंकू का टॉक्स चल रहा है विद एसी मिलान, राइट? एट दिस पॉइंट.
What's going on इंकुंकू in हो AC गया Milan? ऑलमोस्ट, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट लेस, जैसे थॉमस फ्रैंक जावी सिमंस का बोल दिया ना, ऑलमोस्ट डन है इंकुंकू टू एसी मिलान। ही एडमिटेड, ऑल्दो मरेस्का बहुत एडमिट नहीं करता, एडमिट कर दिया But what's ऑलमोस्ट। the price point with Nkunku with AC Milan at कम this ही point? है, मतलब 42 million euros है कंबाइंड इंक्लूडिंग एड ऑन्स। फिक्स्ड इज कम है 35 यार, million euros, which कम है, is very कम है। less in my opinion 50 for तो इंकुंकू। एटलीस्ट, 50 तो एटलीस्ट Nkunku ज्यादा, बट आई मतलब गेट इट एज वेल 40 क्योंकि इंजरीज वगैरह कम थी। से कम होना चाहिए था फिक्स्ड, राइट? हाँ 45 हाँ। मिलियन मैं सोच रहा था टोटल पैकेज होता, तो थोड़ा सा वहां पर -4 चल रहा था, प्लस ये थोड़ा सा लॉस हो गया, प्लस हमने, तो क्या है ना, मैथ्स के हिसाब से गार्नाचो वाज द ओनली फीजिबल ऑप्शन, जो एक्सपीरियंस थे, जो हम्म। पोटेंशियल स्टार्टर है। राइट। एंड फकुंडो भाई लोन पर आया है, राइट? एंड दैट इज अ शॉक। देखो, आई हैव टू लॉस्ट इट, मैं उसका तो राइट अभी तक किया ही नहीं हूँ टू बी राइट, राइट, ऑनेस्ट। राइट। फेयर, मैं फेयर, करना फेयर। भी नहीं चाह रहा, बिकॉज देखो बंदा अगेन इज नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। हम जो सेम प्लेयर जब राइटिंग से खेलता, वी से बॉलर है भाई, बॉलर है, बॉलर है। एनसीसो हम साइन करने वाले थे स्ट्रासबर्ग के लिए, मेडिकल फेल हो गया, तो हमें लगा कि दिस इज लिटरली, क्योंकि वो मेडिकल फेल हो रहा है, वो ब्राइटन में ही रह रहा है, राइट। फकुंडो विल डायरेक्टली गो टू स्ट्रासबर्ग, हमें नहीं लगा था ऑल फैन बेस को। राइट, राइट, बट राइट। नेक्स्ट मोमेंट ही फब्रिशियो भाई साहब ने बोल दिया, नहीं भाई, ये तो चेल्सी आ रहा है 100%। तो बट लोन डील का फाइनेंशियल रीजन क्या है? मैक्सिमम 5 मिलियन लोन फी होगा इफ एट ऑल, राइट। तो इट डजंट काउंट मच इन द मैथ्स जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, एंड दैट्स That- फेयर। एंड उस पे आई थिंक गर्नाचो वाला भी डील पे उस पे एंगल, आई थिंक मेटल made it absolutely clear is कि United accepted the deal at 40 because it was an upfront fee, because we are desperate to get money even for this Garnacho and Hojlund it sales is to a go win-win for भाई, market. it is It's a win-win definitely a win-win. situation. It's a win-win situation for United. Correct. But having said that, Xavi Simons अगर lose कर गए, Chelsea are going in for Facundo Buonanotte again. Fantastic player, fantastic project player, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोन डील, क्या बुनानोटे को उतना चांस मिलेगा? विल दिस पेपर ओवर द क्रैक्स? दिस इज दिस अ पैनिक साइनिंग, इज पैनिक लोन बाय, और इज जस्ट लाइक लोडिंग मोर पीपल फॉर अ लॉन्ग सीजन एट दिस पॉइंट? कितना आई यूजफुल हैव एक करेगा और फकुंडो? थियरी, ऑब्वियसली मैं अभी लाइव जाने वाला हूँ, आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस विद राइट। अदर चेल्सी मेंबर्स आल्सो, आप लोग बोलो इन द हाँ चैट इफ एनीवन फॉलोज चेल्सी क्लोजली। मुझे लगता है अभी भी एक डील हुआ नहीं है, वो निकोलस जैक्सन का। हाँ। निकोलस जैक्सन टू बायर्न, वी केप्ट इट ऑन होल्ड ऑन लोन टू बाय, क्योंकि राइट। न्यूकासल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ दैट न्यूकासल को हो गया कल रात को, आई हम्म। डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद निकोलस जैक्सन, मैंने चेक नहीं किया लास्ट 1 घंटे में। तो मुझे स्ट्रेंज फीलिंग लग रहा है अभी, अगर निकोलस जैक्सन का सेल होता है टू विला, वी माइट स्टिल गो फॉर रॉजर्स। आई हैव दैट फीलिंग, मॉर्गन वी रॉ माइट स्टिल गो फॉर रॉजर्स। और अगर निकोलस जैक्सन नहीं जाता विला, और अगर रॉजर्स नहीं दे रहे विला, देन वी विल कीप निकोलस जैक्सन। आप अगर देखो टोटलिटी में, इट इज नॉट टू बैड। राइट, If you राइट, राइट, think about it, Nicholas Jackson, Joao Pedro becomes your number 10 starter along with Cole राइट। Palmer if you play 3-4-2-1. And आपके बैकअप्स में एस्तो विलियन could play there, Facundo could play there as a backup. Which backup ठीक है, I don't think it's that bad, right? या But will he get game time? No, we know that really एग्जैक्टली। he won't और much. यहाँ पे रुपेश का Starter तो कमेंट, definitely not. एंड रुपेश का कमेंट ये बोल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट अगर आप कंपेयर करो, राइट, चेल्सी गॉट गिटन्स एंड गर्नाचो एंड स्पर्स गॉट Xavi Simons and Kudos, which one has the better transfer window? I think Spurs had a better transfer window, at least in that POV. वो तो ये वाला साइनिंग्स के ऊपर एक्चुअली मेल्टडाउन पॉइंट यही है भाई, सच में बोलूं हाँ। तो मैंने वो एड्रेस नहीं किया अभी तक। मेल्टडाउन पॉइंट वही है। आप देखो तो कुडूस से हम भी लिंक हुए, ऑल्दो कुडूस के लिए तो खैर वी डिडंट रियली गो फॉर इट बिकॉज़ एट दैट पॉइंट, मतलब देखो हमारा एक और चीज पीपल आर फॉरगेटिंग, एस्टो विलियन इज जनरेशनल टैलेंट, राइट, ऑब्वियसली ही नीड्स टू प्रूव एंड इट टेक टाइम। राइट। लेकिन कुडूस के लिए जाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो एक और लेफ्ट फुटेड विंगर जाने के लिए थोड़ा सा, मतलब हम वन डायमेंशनल हो जाते, और राइट, हम सोच रहे थे इतना स्पेंड करना जरूरत नहीं है व्हेन वी आर नीडिंग अ राइट फुटेड विंगर एज पर मरेस्का, राइट। और ज्यादा एक्सपेंसिव भी था, इसलिए हम गए थे। लेकिन हाँ, कुडूस और जावी सिमंस ऑन पेपर, और हो सकता है, आई हैव अ फीलिंग, मुझे तो ये भी लगता है, ऑल्दो मैनचेस्टर ने मना किया, मुझे तो, मैंने एक टैक्टिकल वीडियो किया था कल लाइव स्ट्रीम, उसमें स्पर्स का देख रहा था, आई थिंक दे कुड डू, क्योंकि कुलुसेव्स्की भी बाहर है एज वेल एज अपना मैडिसन, राइट? दे माइट डू विद वन मोर नंबर 10 हु कैन प्ले एज अ नंबर 8, क्योंकि वो फॉर्मेशंस अलग खेलता है, एंड दैट इज योर कोबी माइनो, आई फील। नहीं, कोबी मैनो, या आई मीन स्पर्स के पीओवी से तो डेफिनेटली वर्क्स आउट, बट आई डोंट थिंक सो कोबी मैन, एंड विल टॉक अबाउट इट स्ट्रीम पे। आई डोंट नो अंकित, अंकित भाई आप कितने टाइम पे हो? और अनदर कपल ऑफ मिनट्स इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, ठीक है, 5 तो 5 मिनट्स क्विकली मैक्स। क्विकली आई एम गोना टेक योर ओपिनियन ऑन बिफोर यू लीव ऑन दिस, एंड चैट स्टे ट्यून्ड, विल टेक ऑल कमेंट्स एंड सारे बाकी ट्रांसफर्स, एज यू नो आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, सब पे बात करेंगे। बट अंकित भाई बिफोर यू लीव,
I want to talk about, like, I know there is still opportunities that you are looking to sign loan deals for Buono Notte. Again, is Chelsea missing an opportunity to go for another centre back in this transfer window? You need centre back backing. Badiashile भी fit नहीं है. Where I'm going. It's a long बिल्कुल, season. बिल्कुल Champions League अग्रीड। का fixtures भी is मतलब very अगर tough. आप लोन पे ही ले रहे हो तो व्हाई डोंट वी लोन अ सेंटर बैक? मतलब यहाँ मेरा आप ये पॉइंट वही है 30 साल ना. जो हवा बना हुआ है ना, आई डोंट एग्री विद दैट। नेथन आकी भाई, स्पर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड नेथन आकी बाय द वे He's a ब्रो। very good player, by the way. Very मैं good, समझ में नहीं proven आता ये player. क्या है नेथन आकी इज अ चेल्सी बॉय ब्रो। आप मार्क गेही के लिए आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, क्योंकि आपकी यूएफा पनिशमेंट एंड ऑल दैट आपकी मुश्किल हो रही है टू सेल। लेकिन लोन पर तो ले सकते हो। अगर आप फकुंडो को आप खिलाने वाले हो, यू ये कुड देखो. हैव देन यू नो व्हाट करना चाहिए था। आई थिंक हिंकपी तो आई डोंट अग्री बिकॉज हिंकपी इज एक्सपेंसिव आई थिंक फॉर हिज मार्केट, और वो हमारा बजट नहीं था क्योंकि हम सेल नहीं कर पा रहे थे। हमने Hmm. एक्सप्लेन करने की कोशिश की मिस्टेक Right, फॉर right. द nth टाइम, नॉट जस्ट इन माय स्ट्रीम बट ऑन आशीष स्ट्रीम, आप चेक कर सकते हो थोड़ी देर पहले। तो वो तो फाइनेंशियली इम्पॉसिबल था। व्हाट इज पॉसिबल इज समवन लाइक अ नेथन आकी, समवन, एनीवन फॉर दैट मैटर। लोन एक्सपीरियंस सेंटर बैक आपको चाहिए, अकांजी इवन मैन सिटी के Hmm. साथ अच्छे रिलेशन है, व्हाई नॉट? थिंक अबाउट Hmm. इट। Hmm. 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 ठीक है, Hmm. Hmm. 30 साल, It 30 does. इयर्स का जो एक ये है, प्लस आप चाहते हो बेसिकली गेम टाइम देना जॉश अचिम्पोंग को, अच्छी बात है। मतलब आई टायरिक थिंक टायरिक योर जॉर्ज भी तो है. पुटिंग, टायरिक जॉर्ज भी आपके पास है, अगर ये गेम टाइम तारिक देने के जॉर्ज लिए. को आप ऐड भी करो, तारिक जॉर्ज से मतलब कितना आ जाएगा, 25 कितना ही. मिलियन पाउंड आ जाएगा मैक्सिमम, विच इज गुड मनी फॉर एकेडमी प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। प्योर लेकिन प्रॉफिट. हम्म. अगेन टारिक जॉर्ज अभी हम सेल भी करेंगे तो हम किसी को ला नहीं पाएंगे एज अ सेंटर बैक हु इज राइट. अवेलेबल। अ गुड सेंटर बैक कौन आएगा 25 मिलियन आज के दिन में? हम्म. इट्स नॉट मिस्टेक अवेलेबल इन क्या द मिस्टेक मार्केट। यहाँ बोल रहे हैं कि जावी विल बी अ बेटर साइनिंग फॉर स्पर्स देन एजे. ओ, आई that's a डिसएग्री ब्रो, आई I डिसएग्री। disagree. देखो, एज मच एज मैं जावी सिमंस फैन Eberechi Eze और has is a much proven player. बॉलर है, एजे का ये है ना, इम्पैक्ट इन द प्रीमियर लीग दिखाया यार। प्रीमियर लीग में इज अ दो तीन डिफरेंट। सीजन, 4 सीजन में दिखाया उसने. टाइम लगेगा जावी सिमंस को, लेकिन ही विल डू वेल एज वेल, ये है भी ना. मैं एग्री करता डेफिनेटली. एंड ये काफी ग्रो भी किया है, राइट, इन द लास्ट 2 इयर्स ना. क्लच मोमेंट्स में स्कोर, आप सेमीफाइनल पे स्कोर किया बंदे ने, फाइनल पे ऑफ द एफए कप स्कोर किया है, एंड आई थिंक इज हूँ। पुशिंग रियली हार्ड फॉर द इंग्लैंड स्पॉट एज वेल एज अ बैकअप. आई थिंक एजे का गेम एलिवेट हुआ है सिंस द लास्ट 2 सीजन, एटलीस्ट अंडर ग्लासनर एज वेल, जब उसका ओलिसे के साथ था. सो डेफिनेटली, एंड आई थिंक वी बोथ अग्री ऑन दिस कि एजे इज द बेटर ऑप्शन, राइट. हाँ, आर्सेनल का ये ज़रूर बोलूँगा दैट दे, मतलब आइडियली उनको अपग्रेड करना चाहिए था इन अ प्रॉपर विंगर, अगर हो सकता तो। बट ठीक या. है, मतलब मे बी दे आर ट्रस्टिंग मार्टिनेली वन मोर टाइम। मडवेके एज़ मच एज़ ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई विल बी सरप्राइज्ड वो एंड करेगा सीज़न वेयर ही विल प्ले लेफ्ट विंग। ही विल Yeah, चेंज वही एट सम अनिर्बान पॉइंट। वही बोल रहे हैं. Facundo is just adding another body to the team, won't even make the Premier League matchday squad, just half. Exactly वही होने वाला है. I think that loan deal, I don't know. He's a very talented player, by the way. मैंने जितना देखा है Facundo Buonanotte, अच्छा, अच्छा प्लेयर है, नहीं top अच्छा। top top अर्जेंटीना talent. के लिए कॉल अप लेना लड्डू पेड़ा नहीं है भाई। लड्डू 2 बड़ा नहीं, कैप्स exactly. है अर्जेंटीना के लिए। तो आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड ब्राइटन देखो, स्काउटिंग यू कैन नेवर डाउट You ब्राइटन्स can never फुटबॉल, doubt दैट्स द scouting रियलिटी। Brighton. अब चाहे आप बोलो थर्ड क्लब है, फोर्थ क्लब है चेल्सी का, जैसे है अपना मैन सिटी एकेडमी, जैसे कॉबम Right, खुद है, जैसे एसी मिलान है, ब्राइटन तो और भी है। right. लेकिन द रियलिटी ये भी है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एग्री विद यू कि फकुंडो के से ज्यादा हमें जाना चाहिए था से आंड्रे सैंटोस, एंजो फर्नांडिस को आप खिलाते एज Hmm. कैम्प्स, एज Hmm. Hmm. बैकअप्स, Hmm. Hmm. राइट? Hmm. जॉ पेड्रो, आंड्रे सैंटोस, एंजो फर्नांडिस वुड बी योर बैकअप कैम्प्स। थोड़ा सा वो रिस्क लेना चाहिए था, एंड रादर साइन ईदर अ स्ट्राइकर या Right, सेंटर बैक, क्योंकि वो दोनों में ज्यादा डेप्थ की जरूरत थी, क्योंकि आप दो फॉर्मेशंस खेलते हो। बट ठीक है, देखो एंजो मरेस का जितना यही चीज होता ना इस पॉइंट इन लास्ट सीजन, आई वुड हैव गॉन ऑन इवन लॉन्गर रैंट एंड ऑल दैट। हाँ. लेकिन इस बार इतना ही जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बोल सकते हैं इट्स अ फॉल्स अलार्म जो आया है बाकी क्लब्स को, चेल्सी को। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज और बैड मे बी, कि व्हाट दे हैव डन प्रॉब्ली वर्कड इन 2024-25 टुवर्ड्स एंड। Right, तो उनको लग रहा है पीएसजी का चल रहा है, अपना चल रहा है, तो और पोकेमॉन्स को लाओ। right. अब आई डोंट नो, टाइम विल टेल भाई। मतलब ये देखो, हम तो देखो हम भी फॉलो करते 25-30 साल से फुटबॉल, राइट? आशीष, मी एंड Yes. सम ऑफ यू ऑन द चैट, एवरीवन नोज दैट, राइट? अब एवरीवन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर विंडो में जीत हार नहीं है, जीत हार है इन द फुटबॉल पिच, एंड दैट इज वेयर Exactly. एंजो मैरेस्का ने प्रूव किया है लॉट ऑफ डाउटर्स को रॉन्ग, And इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एग्जैक्टली, एंड मेरा हमेशा ये पॉइंट रहता है अराउंड ट्रांसफर विंडोज. एनी ट्रांसफर अ क्लब मेक्स, कोई गारंटी नहीं है कि आज यूनाइटेड भी इवन बलीबा ले आएगी दैट इज गोना वर्क आउट.
It's a gamble. You are paying, it's not peanuts you're paying. You are paying close to 20-30 million euros money. This is big money, guys. Right? हम लोग बिल्कुल। ऐसे नंबर ऐसे फेंकते रहते हैं because we have पता played चला FIFA and all. एंजो मरेस्का खेल रहा है गर्नाचो एज़ अ सेंटर बैक। Who knows? अगर एमरम खिला सकता है माउंट को एज लेफ्ट विंग बैक, मैं वो तो तो who हद knows मैं भाई. ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड द सरकाज़म बट जी दैट इज़ व्हाट मैनेजर्स मतलब अलग ही सोचते हैं भाई। तो कहीं न कहीं समटाइम्स वो ईगो बोल सकते हैं आप जो भी Right. बोलते हैं बट देयर इज़ सम थॉट प्रोसेस मुझे सिर्फ ये डर है कि आई होप कि Hmm. इस बार द बोर्ड एंड द मैनेजर आर इन कन्वर्सेशन अनलाइक जो Hmm. टुकल के समय हुआ था टुवर्ड्स Right. एग्जिट। दैट्स द ओनली स्लाइट थोड़ा-सा फियर है मेरे मन में। Right. बट ठीक है मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखो मे बी वो लोग होप एक्सपेक्टेशंस कम ही रख रहे। आइडियली क्या मैं चाहता ऑब्वियसली जॉब पेट्रो बहुत अच्छा कि मैं चाहता भाई हमने बात भी किया था आशीष के साथ ऑन Hmm. ऑलमाइटी ब्लूज एज वेल एज ऑन हैशटैग फुटबॉल कि मैं तो चाहता था भाई प्रूवन स्ट्राइकर्स राइट प्रूवन सेंटर बैक्स एक्सपीरियंस जो हम लास्ट 2 सीजन से बोल रहे हैं चेल्सी फैंस Exactly. Exactly. हमें वही चाहिए था बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव अ प्लान एंड दे थिंक इट्स वर्किंग अब देखते इफ इट कंटिन्यूज टू वर्क जो पहले नहीं कर रहा था बट आउटगोइंग्स आर की अभी भी लास्ट के 72 आवर्स अभी भी बाकी है ट्रांसफर विंडो में Definitely. It's gonna be एंड आई थिंक दे crazy. आर Kobbie Mainoo वाला जो loan request आया ना, who knows? Chelsea might just go for a loan deal, right? So you just never know in this मैं one, तो वो आज करने वाला था ट्वीट उससे पहले फकुंडो right? वाला आ गया Yeah, yeah. Hope you can translate this to English. Would help followers who don't speak Hindi. Absolutely, yes. Mostly my videos are in English. If you don't, I think Ronin, like most of my streams, I keep a mix of both English and Hindi. Sometimes for people who don't understand English as well, so I keep a mix of both. But my primary videos mostly are in English, so you can definitely go and check out that. So Ankit bhai, I know you have to leave for your stream. यस Uh, यस thank you so much first of all for माय joining, प्लेजर and भाई माय प्लेजर विल always have a प्रोबब्ली pleasure. सिंक अप अभी तो बहुत बाकी है यार It's a 72 आवर्स long में season. पता नहीं क्या हो जाए तो Definitely. बिफोर वी गो अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन इन द चैट एज वेल एज आशीष Yes. मिलते हैं यार और मिलते हैं भाई वीकेंड के लिए तैयार हो जाओ मतलब absolutely. बवाल मचेगा इस वीकेंड Exactly, चलो exactly. And thank you so much. And chat, I'm gonna stream more for like half an hour, 45 minutes. So do stay tuned. Sara chat lenge, we'll talk बिल्कुल about it. बिल्कुल But Ankit bhai, thank you so much for joining again. It was an सी सी absolute pleasure. Always a pleasure to have you. Bhai. सेम And सेम subscribe to Almighty Blues, guys. अगर chat आप लोगों ने नहीं किया है तो. Thank you so much. Chalo, we'll talk about everything now. Sara chats lenge, we'll talk to you about all the transfer window that's happening right now. I know Ankit bhai had to leave for his stream, but really appreciate he joined in. अब आओ सारा चैट लेंगे सबसे बात करेंगे विल टेक एवरी कमेंट राइट नाउ राइट अनिकेत बोल रहे हैं कि जैक्सन बेंचेस फ्रॉम चेल्सी टू बायर्न फुटबॉल हेरिटेज ओ माय गॉड भाई आई डोंट नो हाउ जैक्सन टू बायर्न मेक्स sense in my opinion, right? Why did not Newcastle go for Jackson, who is a better Premier League proven player than Woltemade? Could have paid much lesser, potentially loan deal as well. Newcastle could have saved the money, in my opinion. Right? When I talk about this whole situation, right, with Woltemade, right, it is a desperate move by Newcastle, guys. 80 million plus add-ons for Woltemade, who just surprised everyone just one season while they actually had Nicolas Jackson, was Chelsea was actually willing to let him go on loan, as they're looking to let him go on loan to Bayern as well. Did Newcastle miss an opportunity? They could not even complete the Johan Visa signing as well. They could have actually saved some money, could have actually got Nicolas Jackson and Wissa both as absolute power X factor players to help them out. But I don't know what's the footballing POV of Newcastle is around this deal. But chat, let me know what you think. Is this a desperate move? Does this player even make sense for Newcastle? We do not know. And I'm really confused when I saw this transfer. And guys, now obviously Ankit bhai had to leave, but now I'm a solo. I'll take all chats. Sara chats पे बात करेंगे. So stay tuned, guys, and like the stream, guys. If you have not liked the stream, back to back streams on Ash Talks Football, guys. Back to back streams. अभी तो 23 likes ही हुए हैं. We need more likes, guys. 50-60 likes कल हुए थे, परसों भी हुए थे. So we need to do more. आप लोग देख रहे हो तो definitely do like the stream. To be honest, this Buonanotte deal makes sense more for Chelsea for over Simons. Simons would have demanded more game time at Chelsea, which he wouldn't have got because Palmer is there. Now I kind of agree there because from a player profile POV, na Facundo Buonanotte is an absolute top talent.
रुपेश, एब्सोल्यूट टॉप टैलेंट। मैंने उसको लेस्टर में जब देखा था, ही वाज लाइक अलोंग विद when he was loaned out to Leicester as well from Brighton, he was so good alongside Bilal Al Khanous. Al Khanous भी एक ऑप्शन है in the market if people don't know. Al Khanous was also a fantastic option. तो वो दोनों players were very impressive in that absolutely lackluster Leicester squad. कितना चांसेस मिलेंगे आई डोंट नो मैन, आई डोंट थिंक सो उसको इतने चांसेस मिलेंगे अनलेस मरेस्का ने कंप्लीटली कैरेबाओ कप छोड़ दिया है। इज लाइक भाई मैं बच्चों को खिलाऊंगा, टैरिक जॉर्ज, फकुंडो बुआनोटे, इन लोग खेलेंगे तभी इनको चांसेस लग रहे हैं मेरे हिसाब से, राइट। अंकित भाई चिंता मत करो, ब्रिज पे जावी की हैट्रिक इज लोडिंग दिस सीजन। एब्सोल्युटली फेयर, हो सकता है, हो सकता है। सारा चैट्स लेंगे क्विकली, आई एम टेकिंग ऑन द चैट्स राइट नाउ। मेनू सेल नहीं होगा, एक मिड तो आ ही नहीं रहा है। आई नो मैन, एंड एग्जैक्टली माय इशू राइट नाउ कि अगर अब तो गर्नाचो का अपफ्रंट 40 मिलियन फी आ चुका है आपको, राइट। Up now you'll get upfront fee also, even potentially a loan plus some fees for Hojlund as well. Is there an opportunity to still use that money to get a midfielder right now? आपके अगुमे हो गए, आपके हैकनी हो गए, right? But I'm not even sure whether these signings will even work as well, right? तो उस पे definitely मेरा एक POV है कि I think we are just losing out on time and I don't think so any more signings is happening. Chelsea didn't go for Hincape. Exactly. Chelsea did not go for Hincape. That was a weird deal in my opinion, but it is what it is, bhai. Simons has always been the biggest fish in the smaller pond. I think he finally needs a club on the top level where he can play consistently, a week in, week out. I think तब उसका potential ज़्यादा निखर के आ गया in my opinion, right? You could have also done a loan plus obligation. I don't get it why United did not go for loan plus obligation, but I get it. We don't have UCL, so he would not come, right? तुम किसकी बात कर रहे हो at this point, right? Loan plus, okay, Hincapi के लिए, okay, Hincapi has definitely played in that back three role for sure. We have seen this in the past as well. Is he good for United? I do not know. See, that's the whole thing. Is Hincapi even that, लाइक क्या वो इंटेंसिटी उसकी उतनी है कि वो ट्रैक बैक भी कर पाए? आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर वी हैव हर्ड एंड सीन, ही इज अ लिटिल बिट ऑन द स्लो साइड फ्रॉम अ प्लेयर पीओवी। वो चल सकता था बुंडेसलीगा में इन माय ओपिनियन, बट वही आर्सेनल, they're looking more of a Gabriel backup, even a Calafiori backup at that same point as well. So we'll see, man. Hincapié is more of a left back than center back in a back four. Exactly. In a back four, he's a most probably a more of a defensive underlapping, just a regular fullback, not someone who will just dart down the flanks, right? Those type का player है Hincapié. In a back three, he's a left center back. Right now, what the role Luke Shaw is playing right now for United, I think that's what it is right now. Right? Will City sell Ake? Good question, Krishanu. Good question. Will City sell Ake? Ait Nouri is back fit again. Ake को कितना अभी पेप ट्रस्ट करेगा? We do not know. Guardiola is still not back as well. क्या वो चांस सिटी अभी लेगा? Nathan Ake, but अगर if there was a legit bid for Nathan Ake, right? वो आता. City would have actually used that money to get even, आपके Livramento हो गया. They would have actually gone for that deal, in my opinion. Simons has always been the biggest fish. Oh yeah, ये comment ले चुके हैं. As Chelsea have PTSD from previous right back Leipzig, okay, previous RB Leipzig players, I'm not disappointed to miss out on Xavi Simons. You know what? Actually, Chetan, thanks for this comment. I think, in my opinion, agar Chelsea, if they play it right, they have players that can actually be integrated into a squad. Um, in a much more intelligent way at this point. I think that's a good opportunity to give the likes of Gittins and Garnacho even more minutes. अगर आप लोग spend किए हो close to 100 million on both these players, right? Close to 100 million on both these players, you need to give them game time. And Cole Palmer also is a fact which is clear that he can get injured. एक था ना theory की that he's going to play week in week out, it's not going to happen, right? So उस time पे you and you know what, Enzo Fernandez can actually play that cam role if sometimes uh, Maresca switches to a back four system. So उतनी tactical fluidity इस time पे Chelsea में है, which has worked as well, which is a fantastic situation, right? अब in my opinion, will Garnacho bring that impact in this Maresca squad? Only if they play with a back four and a 4-3-3. Yes. In that pivot, in that 10 wala role, that's where I think they missed out, in my opinion. Right. So
Definitely we'll take more chats, so do stay tuned. सारा chat लेंगे. Leicester का best player था last season. Absolutely. Absolutely he was, bhai. Facundo Bonanete was so good. Even Bilal Alkhanous was good. In short term, Eze will feel better, which Arsenal actually needs, but in long term, Xavi will be better. Player potential तो बहुत अच्छा है. Eze at least will give them easily 4-5 good years, bhai, to Spurs. And he's going to do it. Eze is one of the most consistent players over the last 2 seasons that we have seen in terms of performance. And I think now that he has taken the step up to a Champions League club, we'll see more from Eze. And if physically Eze even looks much more better. But Arsenal will is exactly as a left winger. मैंने उसकी video बनाई है, guys. Do check out a very detailed analysis video on how Eze would actually work on what might not work at Arsenal even. Uh, उसमें मैंने बात करी है, like so from player profile POV ना left half space से Eze will make runs and just cut in, link up with Richarlison and all. So it looks like a good signing. अगर centrally खेलेगा ना Eze is a much more dangerous player than playing wide. That's why I feel Eze would have been a better deal for Spurs, but now they have got Xavi Simons. I think Xavi Simons is a very good player to play in that exact camp position because Spurs fans know this. They cannot trust Madison and Kulusevski ka what they say the the injury record. They always get injured uh, when the season is like in its most active point of view. Like January के time पे it is so difficult to maintain fitness. That's where I think Xavi Simons playing there is gonna do good for both Madison and Kulusevski क्योंकि आप उनको गेम टाइम को मैनेज कर सकोगे. That's my POV, right? आज सुबह उठा था Xavi आ गया, क्या पता Savinho आ जाए. Never stop dreaming. It's the transfer window, guys. It's a transfer window. If you guys had money for MGW and lost it, if you guys had money for Eze and lost it, and got Xavi Simons, you definitely have money for Savinho. I think deal is definitely in the works. And now, but मेरा एक उसमें POV है, right? If Rodrigo is finally decided to stay at Real Madrid, right? Then Man City is not even going for the Rodrigo, so they might not even need to sell Savinho. So वो हो सकता है, right? Siam is here. Thank you so much for joining, by. Slowly I'm taking all comments, by. So stay tuned. भैया यहाँ बलीबा कहाँ आएगा? सीएम गोलकीपर चाहिए, अभी तक नहीं. मैं तो इतनी बार बोल चुका हूँ अनिकेत, राइट? आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स सिंस द लास्ट 7 to 8 months. आप क्या कर रहे थे एज अ रिक्रूटमेंट टीम, राइट? एज एज अ एज अ मैनेजर टू इवन डिमांड द राइट players for your team. You had 8 months to prioritize goalkeeper and midfielder, and you still decided to trust a goalkeeper that has made mistakes time and time and time again and absolutely gave away the game against Grimsby. अगर वो mistakes नहीं होती, अगर उसने saves किए होते, हम still, even if we had a very bad start, हम लोग आराम से recover कर सकते थे against Grimsby, like we did in the second half, right? तो अगर आपके आपके players basic football mistakes करने लगे, तो इस पे manager, how is that manager even starting that goalkeeper? Absolutely, like pisses me off, man. किसी और को बुलाओ थोड़े टाइम के लिए, लाला और समवन हो सके तो बुलाएंगे भाई. लाला मंडे को आ तो रहा है, मैं बोल रहा हूँ. लाला विल ऑलवेज बी हियर इन द चैनल. लाला आयुष इज ऑलवेज गोना बी हियर इन द चैनल भाई. हम लोग इतने साथ में लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, मंडे को तो होगा ना. सूरज और लाला दोनों आने वाले हैं, राइट? वी नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ गेस्ट ना. हमेशा हमें इफ यू ऑलवेज स्ट्रीम विद द सेम पीपल हमेशा ना, इट आप लोगों को मजे मजे नहीं आएंगे. आई एम आल्सो ट्राइंग टू गेट मोर गेस्ट ऑन दिस चैनल. होपफुली more people will gonna come, and Lala is obviously gonna come भाई. मैं उसके स्ट्रीम पे वो जब भी बुला के मैं जाऊंगा, he is gonna come in my stream as well. मंडे को हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं guys. If you do not know, मंडे को बहुत बड़ा स्ट्रीम होने वाला है. We're gonna absolute go bonkers उस night, that night. He's got लाला के आने का डाउट ही नहीं है यहाँ पे भाई. बायर्न नहीं, यूनाइटेड को हायर, ओके, बायर्न ने यूनाइटेड के चूतियों को हायर किया है लगता है. फेयर एनफ, हो सकता है. Ideally, Chelsea should just keep Jackson and play him as a striker along with Delap and use Pedro as exactly Chetan. Exactly Chetan. From a, like, I don't think so. Like Chelsea ever needed to sell Jackson in my opinion. But अगर आप उसको भेज रहे हो तो लोन पे क्यों भेज रहे हो, right? That's been my whole POV, bhai. So definitely I agree with you on this one. As by just suggestion, just because someone is guest, you don't have to respect every opinion. You should put your own point and sometimes disagree. You don't have to agree on everything. When did I agree with lot of the? कल तो मैंने बहुत सारी पॉइंट पे नेथन से भी डिसएग्री करी है, राइट? अंशुमन भी आते हैं तो उनके साथ भी मैंने डिसएग्री करी है.
I don't have to disagree. It's not about disagreement or agreement. I want to start a fight or not. If someone as a guest panel is speaking something on some certain POV, it's the host's responsibility to listen completely, process it, and then respond to it. Anyone is coming from a POV. मैं चढ़ के उनकी पॉइंट को नकार के completely dismiss कर दूंगा. That's not my thing, right? As a mature individual, you need to listen to others' opinions, right? Process it, then think what you want to say. जैसे कि जैसे कि मैं डेफिनेटली बोल रहा वो उनसे उनसे काफी पॉइंट्स पे मैंने डिसएग्रीमेंट करी है मैंने, राइट? बट वॉट एवर यू आर सेइंग वाज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस, राइट? Right? So we also have, as chats, have a lot of disagreements together, right? As well. So I don't know why you think like that. मैं हमेशा ओपन रखता हूँ, and I'm absolutely say the truth every time that I would like to do that, right? बट ऐसा हमेशा जबरदस्ती मैं डिसएग्री तो नहीं करूंगा ना हर चीज पे. एक गेस्ट आया तो उसका पॉइंट और पीओवी तो मुझे भी रखना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. Stuttgart signed him for free and sold for 80 million. Absolutely, man. They are the Stuttgart, the Frankfurts. They are known for selling, man. They just Bundesliga clubs have figured out how to do this, right? Woltemade looks Anthony Gordon without a mustache. Is he though? Let me check ना. check करते साथ में. Is he? Oh right. A Newcastle jersey पे तो ज्यादा लगता है, man. With the and I know where you're coming from. It's the current hairstyle of Gordon that actually making him look like Voltemade with a mustache. Fair enough, bhai, fair enough. But chat bhi batao, is it a desperate move? Is it not a desperate move? So you guys need to talk about it as well. I feel the relationship between the club and Menu will suffer if it does not get game time. Absolutely agree. If United also block a loan move, we risk losing another academy. मैं तो वही बोला ना start of the stream पे. Kobbie Mainoo, and let's talk about Kobbie Mainoo, right? I completely get why Kobbie Mainoo wants to leave and go to a loan deal, right? Completely get it. बिकॉज उसको मिनट चाहिए. टुकेल ने डायरेक्टली आज बोल दिया इंटरव्यू में कि कोबी मैनू को मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज ही डज नॉट हैव एनफ मिनट्स. ही नोज द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर इज देयर. ही हैज डन इट बिफोर. ही प्लेड इन द यूरोज एज वेल. बट द थिंग इज, अगर उसको गेम टाइम नहीं मिलेगा, मेरा प्रेडिक्शन ये है, दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर दिस वीकेंड्स लाइनअप. एंड कल वॉच अलोंग भी करेंगे मैन यूनाइटेड वर्सेस बर्नली. सो सब आना आज स्ट्रीम पे. विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ स्टफ ऑन दैट स्ट्रीम एज वेल. वॉच अलोंग पूरा होगा 3 घंटे का. You will see the exact same lineup that you saw against Fulham. Menu start nahi karega. And that worries me. Like if you don't trust your current midfielder lot, then it does not make sense, bhai. A lot of desperation, but I like his profile. Yes, fair enough. For if you're talking about Woltemade, yes, fair enough. Jackson and Visa both are African players. AFCON may be the reason, but it's only for a 1 month period. Na? You don't make signings for just 1 year. You make signings for at least 2-3 years. आप देख के चलते हो उस हिसाब से, right? Even United made signings like Mbumo, right? But and AFCON will come, will miss 4 players. तभी मैं Hojlund को sell नहीं करना चाहता था. But अगर upfront fee अपने को मिल रहा है for Hojlund, let's say Leipzig just comes in, and right, and we're gonna discuss about that as well, right? ये ऑफर के बारे में Napoli का है जो करंट ऑफर 45 million ऑब्लिगेशन है, विच इज अ गुड थिंग, प्लस लोन. अगर लाइप्जिग काउंटर ऑफर लेके आ जाती है कि नहीं हम इसको अपफ्रंट फी देंगे एंड सेल कर देंगे एंड आप पूरा ट्रांसफर फी में ले लेंगे विदाउट एनी लोन, this will be a fantastic deal for United, right? But this needs to happen soon so that we can invest in a midfielder, which might not happen right now at this point. मेरे को लग रहा है. No, I completely disagree with that. Woltemade is perfect replacement for physical traits and ball striking. Yes. हुआ पेड्रो और ये होता तो गॉड मेरा तो टॉप 4 शाउट आउट होता न्यूकासल. Fair enough. I think Woltemade unanimously from a player profile POV, he has good traits, but Premier League is different. Abhay, thanks for this comment. Premier League is different. A lot of players have actually come and failed in the Premier League, but I know there were doubts on Ekitike, but it definitely did perform. Does Woltemade have that pace and that X factor, right? क्या वो Isak जैसे numbers provide कर पाएगा? That's the whole POV. I think it's a downgrade over Isak for sure. But अगर Isak जा रहा है तो they should have replaced with at least 2 strikers in my opinion. I think they're still in the market for Johan Visa, but I think they definitely overpaid for Woltemade in my opinion. It's a desperate move. 80 million is too much in my opinion. They should have actually gone a bit more lesser, or even Jackson in my opinion, right? And that comes to this factor, right? Agar this thing is happening on Woltemade, is Liverpool
gonna pay overpay? Is Liverpool gonna overpay for Alexander Isak? Fantastic talent, fantastic player. 150 tak bhi ja sakta hai. Who knows? And chat, let me know where this signing might actually, where this valuation might actually go. But we're gonna talk about a lot of things with the chat as well right now. So we'll do that. Woltemade needs time to settle in English and Newcastle football. Exactly. It'll take time. He's not gonna fire all cylinders right from game one. Maybe he will. Maybe he will, भाई. मैच की रिव्यू ने बनाना आप और अपने सही आपने सही वी वोंट बी साइनिंग डीएम इफ इनियोस डज नॉट प्रोवाइड a DM to Ruben will fail. I can bet on this. Absolutely. I have been saying this since the start of the season, Yogadi. Start of the season. मैं कितनी वीडियोस भी बनाई इस बारे में. मैंने मिडफील्डर के लिस्ट बना दी एक वीडियो. उसमें एनालिसिस करके कि कौन फिट हो सकता है यूनाइटेड पे कौन नहीं हो सकता. On the day on you know when I made that video on the day Sesko was signed. क्योंकि मुझे as a fan I know the real issues of the club, right? Where everyone was celebrating Benjamin Sesko ka signing. I made the video on midfielders because as a fan I care for my club more than just winning online narratives, right? आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो. It's more than 1000 views on YouTube. It's a fantastic video. I think you will definitely love it अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो. But I have been saying this. Our tens, our wing backs and our strikers will never work if we don't have a good pivot system. It's never going to work. The main thing is that Grimsby wala match showed that we lack in right wing or right wing back. If Mazraoui is injured or has a bad game, then we are doomed. Absolutely, man. Absolutely. Absolutely. मैं कितनी बार बोला मजरावी तो इंजर्ड है अभी भी. तभी भी हम लोग उसको राइट विंग बैक पे बिकॉज मजरावी इज नॉट अ राइट विंग बैक, ही इज अ फुल बैक. हमने पास all the players right now in this current squad are playing out of position and we had 8 months to figure this shit out. We did not. Dumfries available था 25 million पे guys. Dumfries 25 million in the start of the window. अभी अगर आप Dumfries के लिए जाओगे ना, he's gonna cost at least 35-40 million, right? अरे क्या बात है. CBT Thunderbolt, thank you so much. Ajbhai, Hincapi is definitely better than Dorgu at left back. No, left wing back पे I don't think so, man. And definitely better than Licha, Shaw and Maguire at left center back. वो हो सकता है. Because he has proven, na, he's proven at Leverkusen. It's fair enough. He actually perfect fit for United. No debates on this. Yeah, no debates on this. तो मैं agree नहीं करता. Why can't I have a debate on it, right? I know Arsenal is going for Hincapié right now, right? मैं अगर अगर Hincapié would have actually worked, maybe the manager, हम believe करें नहीं believe करें उसमें matter नहीं करता. If the manager does not believe in the player that he wants to sign, अगर वो लिस्ट में कभी था नहीं तो ये डिस्कशन का पॉइंट बनता ही नहीं. अगर फ्रॉम अ फुटबॉलिंग पीओवी हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पे, देन आई वुड डेफिनेटली से कि ही इज डेफिनेटली एन अपग्रेड ऑन लीचा. लीचा तो नहीं बोल सकता अभी फिलहाल. शॉन मैगवायर तो डेफिनेटली. लीचा का अपग्रेड मैं तभी बोलूंगा कि इफ हिंकापिए स्टेज इवन फिट, मोर फिट, देन यस एब्सोल्युटली. लीचा डज नॉट स्टे फिट तो उस पर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि तो इस पे प्रोज एंड कॉन सारे हैं. बट इन दिस स्क्वाड आई डोंट थिंक सो वी. और हिंकापे हमको एक्सपेंसिव भी पड़ता गाइस. 60 मिलियन पड़ता अपने को एटलीस्ट. यू सी व्हाट आर्सेनल इज गोइंग ऑन विद द डील राइट नाउ. सो मेरा उस पे वो पीओवी है. I also realized that Thomas Frank is doing great with his available players, which Ruben is not been able to. Bro, they have Pedro Porro and we have Dallo. They have Bissouma, we have Ugarte. They even have Pape Mate Sarr. They have Bentancur. They have those kind of midfielders that pressed us in the Europa League final and they pressed City up front. That's what they did, man. Exactly, guys. Do join the Discord server for predictions as well. Prediction के लिए भी prizes हैं. FPL के लिए भी prizes हैं. So definitely do join the Discord server only for Discord servers at this point. And soon अगर memberships खोल दिए तो you'll already be part of the membership squad in that Discord server. So definitely आप लोग join कर सकते हैं before we open membership soon. Garnacho will play as touchline winger with Enzo taking the left attacking position. Only concern here is how much will Garnacho track back when out. Garnacho track back कर सकता है. He will definitely do. He will give you a lot of energy. Final product पे issue है चेतन. Garnacho का क्या है ना, फाइनल प्रोडक्ट पे इशू है. अगर फाइनल प्रोडक्ट गर्नाचो अपनी इंप्रूव कर लेना, देन गर्नाचो से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो. गर्नाचो डीप से काउंटर अटैक किया है उसने यूनाइटेड के लिए, तो ट्रैक बैक आप डेफिनेटली ले सकते हो. क्या पता वी ऑफर 100 million to Baliba at deadline day and Mainoo for loan so that don't have to find someone replacement. Never stop dreaming. We never stop dreaming, but I don't think so Baliba signing is going to happen. Sene Lamens का भी तो डील स्टक हो गया है. It's not happening as well. I did not mean to call Ankit by sir, but I mean he left early, so call Lala for the rest of the stream to enjoy the stream more. He's actually doing another stream himself, right? So मेरा था कि मैं भी सोलो स्ट्रीम थोड़ा करूं.
हमेशा भी तो बिकॉज वीकेंड पे भी आए तो मंडे को तो होगा, मंडे को स्ट्रीम हो रहा है राइट, मंडे को स्ट्रीम होगा, मंडे को तो डेफिनेटली इट विल बी लॉट ऑफ फन भाई विद सूरज एंड लाला बोथ. When you're in a goalkeeper crisis, you're going for Senna Lamens, an unproven player who are probably the best in the world. GGO, it does not make sense. मैंने बोला है, मैंने बोला है ये बात, मैंने कितनी बार बोला है ये बात. अपने को गोलकीपर अगर प्रायोरिटाइज करना था तो डोनोरुमा के लिए क्यों नहीं गए? बिकॉज एमरिम विल नॉट इवन प्ले फ्रॉम द बैक फ्रॉम द गोलकीपर. तो क्यों नहीं गए हम डोनोरुमा के लिए? नाउ इज गोइंग टू सिटी. ही इज अ वे बेटर गोलकीपर देन ऑल थ्री गोलकीपर्स कंबाइंड, डोनोरुमा. बट ठीक है, Senna Lamens is highly regarded in the scouting network, so obviously I'll trust the scouts on this one and trust Christopher Wivel and his vision on this one. But yeah, that this is what it is, bhai. Disagreement, agreement is always not always the thing about respecting others' perspective and thoughts. That's life. Disagreement and agreement is not always the thing. It's about respecting others' perspective. Exactly, exactly. That's my whole right. मैं जबरदस्ती किसी को disrespect करके उस पर disagree थोड़ी कर सकता हूँ. Right? Whenever a panel is making a point, I need to listen to him. Na? I need to listen where he's coming from. He's more expert on Chelsea than me, right? And when he's talking about, and he's an experienced streamer as well. So उस पर अगर मैं हमेशा जब डिसएग्री करने की बात होती है, राइट, आई विल डेफिनेटली डिसएग्री. मैंने इवन व्हेन लॉट ऑफ पैनल हैव कम टू द चैनल, मैंने उनसे डायरेक्टली डिसएग्री भी किया है. बट उस पर रेस्पेक्ट भी किए उनकी ओपिनियन की. इफ दे थिंक दैट आई एम रॉन्ग इन some ways, I am wrong in some ways and I am ready to accept that भाई. यही तो फुटबॉल डिस्कोर्स, यही तो बदलना है. अगर मुझे क्लिकबेटी कंटेंट बनाना है तो मैं बना सकता हूं. मैं वो नहीं करना चाहता ऑन दिस चैनल. आई डोंट वांट टू मेक क्लिकबेटी स्टफ ऑन दिस चैनल भाई. राइट. अरे हर्षा इज हियर, थैंक यू सो मच भाई. या सो सिमिलर टू गॉर्डन. एग्जैक्टली, वो करंट हेयर स्टाइल ऑफ गॉर्डन इज एग्जैक्टली द सेम एज वोल्टेमाडे. आई थिंक वो ना वो एआई पिक्चर है. वो उसने गॉर्डन वाले इस पे वो रीजन पे वोल्टेमाडे का चेहरा लगा दिया होगा विद मुस्टैश एंड ऑल. मेरे को वही लग रहा है. फेब्रिजियो रोमानो का पिक्स है, राइट. No, I meant that to put your POV opinion to it differs sometimes because the person in front is putting up an opinion, not facts. Rest of not pointing anything to Ankit sir. No, 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 that's fair. That's fair. Good night, man. Absolutely, absolutely. Just asking if he really leaves next week, who would be your choice to replace him? I really just don't want to go through that life cycle. किसके बारे में बोल रहे हो? Which player? Which player, man? Which player? Let me know. कौन से प्लेयर की बात कर रहे थे? मरेस्का ने सैंचो से ट्रैक बैक करवा लिया तो गर्नाचो क्या चीज है? एग्जैक्टली. भाई सैंचो ने ट्रैक बैक किया है बट उतना नहीं किया है. बट गर्नाचो डेफिनेटली डू. आदित्य, थैंक्स फॉर दिस कमेंट. लाइक कर दो स्ट्रीम गाइस इफ यू हैवंट लाइक द स्ट्रीम येट. वी आर क्लोज टू ऑलरेडी वे 711 सब्सक्राइबर्स गाइस. 711. होपफुली 1000 पहुंच जाएंगे इन फ्यू मंथ्स. मेंबरशिप्स आर गोना ओपन सून एज वेल, होपफुली. मेन थिंग इज दैट रूबन इज स्टबर्न विद द सिस्टम. आई अग्री ही इज स्टबर्न. अ मैनेजर शुड बी फ्लूइड. आई एब्सोल्युटली अग्री. ये कल ओनाना को खिलाएगा तो फैंस क्यों नहीं बोलेंगे सैक हिम? एंड प्लीज ब्रूनो इज नॉट अ सी. एग्जैक्टली अभय, मैं ये सारे पॉइंट पे अग्री करता हूँ. मैंने कल ही वो स्ट्रीम पे नेतन के साथ मैंने बात करी इस बारे में, राइट. दैट how does it make sense that you played suddenly Mount in left wing back, Dillit bhai right wing पे खेल रहा है, Mbumo is everywhere on the pitch. There was no coordination. When I saw United against Grimsby as well, and even against Fulham in the second half, I had no idea where which player is exactly playing. Right? I agree on this one. By the way, how's the Facundo guy of Brighton? He's a good one, bhai. Aditya. He's a good player. He's a very good. He earned his place in the Argentinian squad as well. I think two appearances being uske. And he was one of the most impressive players for Leicester in that whole squad, even if they got relegated. So he had a good loan outing in my opinion, right? He's a good player. But usko kitna minutes milega, I'm not sure at Chelsea. Ineos haven't backed him yet. I know Ruben want DM, but Ineos are not doing them. Exactly. मैंने तो 6 out of window का मेरा थंबनेल था ऑन दैट स्ट्रीम आई डिड. इट वाज 6 out of window स्ट्रेट अवे. मैंने थंबनेल पे डाल दिया था 2 weeks बैक. It was a 6 out of 10 window. We failed to sell players. We failed to back Amorim in the market as well. But problem ये है कि क्या Amorim को midfielder even चाहिए था in the central defensive place. I know that's why they went for Baliba. But what other options they had? And even if they had the options, why was Ineos and Amorim so late in going for a midfielder? अगर आपको चाहिए midfielder to connect the tens and the forwards and the wing backs, क्यों नहीं prioritize किया midfielder को? That's been my question, भाई. Because I rushed to make my FPL team, forgot to do it, but saw 31st. Exactly. यार कल है भाई. कल है.
Lamens अगर आएगा तो people will put pressure on him that he should not perform like Prime Day or Allison. He does not know what is coming for him. Even if relegated, we will still be the biggest. नहीं भाई relegated हुए तो भाई it's नहीं नहीं नहीं. Don't talk about relegation man. It's a nightmare. और Amorim के बारे में. Okay, you're talking about Amorim. If he really leaves next, I don't think so. He will. Would be choice to replacement? I really don't want to go through that cycle. I don't know, man. Who's available at this point? Managers कौन available इस टाइम पे? नागल्स में तो जर्मनी नहीं छोड़ेगा, राइट? कोई नहीं है इस टाइम पे. कोई नहीं है. कोई नहीं है. कोई नहीं है. Bitter is here, man. Thank you so much for joining. What's up, Ash? I'm good. Hope you're doing well as well. Abhay, for the same reason, I feel now that Emi Martinez would have been the best option because of the mentality to beat United goalkeeper Donna's mentality, but the United pressure is so much, he would also fail. नहीं, Donna fail नहीं करेगा भाई. Donna in any club, he will never fail. Same goes for Emi Martinez. These are the players that have reached world class levels, have won bigger trophies for bigger clubs. ये fail नहीं करेंगे आके. अगर वो fail करते थे, it's up to them, but chances कम है. And it does not show that hunger or desire is bigger than any formation. Gary Neville or Rio said that never relied on formation. They used to tackle like mad, diet for every ball. We bullies. वही ना, tactic board against Grimsby does not make sense, right? And I have always said this, that Amorim at least needs to back his players while he's on the touchline, right? Don't get nervous. Stay calm. He stayed calm against Man City. We actually went on to win against Man City. If you remember that game correctly, in that 2-1 win at Etihad, he was actually very calm on the dugout. He was calm and actually was instructing कि आमाद जाके वो run बना, Martinez वो run बना. He needs to do that. Back your tactics ना. चलेगा नहीं चलेगा, that's a different thing, right? भाई I think भाई Fermin Lopez और Chelsea, is it still happening though? I don't think so. Fermin क्यों छोड़ेगा भाई? Fermin क्यों छोड़ेगा? Bruno, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Mainoo, and even Ahmad at completely different roles and position for the best skill set. Agree. It was once Fred, Maxos, Pogba, historical mistakes. Absolutely historical mistakes, man. No player right now in this United squad is playing in the right position. That's why they're not performing to the best. It is what it is, man. Mourinho is sacked by Fenerbahce, by the way, guys. He's sacked. I'm all Amorim in, but options available are Iraola, Glasner. Glasner is a good option. Mourinho, Nuno Santos, and Fabian Hosler. Fabian Hosler, I'll still give him a few more seasons because again, that play from the back shit will happen at United. I don't want him. अगर चाहिए तो Glasner might actually still work with this formation, but again, Glasner के पास वो players नहीं है इस time पे. Mourinho तो definitely not again, भाई, not again. He's past his prime. What one of my most favorite managers of all time, Jose Mourinho, but he is past his prime, guys. Iraola is a great option in my opinion. I'm telling you, Emi Martinez is overrated, भाई. Overrated तो नहीं बोलूंगा, but he has proven ना, he's proven himself. अभी overpriced हो सकता है, overrated नहीं हो सकता. There's a fine line between those two statements actually. भाई तो कैप्स में लिख रहा है, बहुत गुस्से में आज. अबे एमरिम को निकालेंगे तो नेक्स्ट मैनेजर विल हैव प्लेयर्स साइंड बाय एमरिम फॉर दैट मैनेजर. ये सेम साइकिल तो रिपीट हो रहा है एवरी मैनेजर. टेनहैग हैड इसके साइनिंग्स, एमरिम हैड टेनहैग के साइनिंग्स, रैंगनिक जब आया तो वो ओले के साइनिंग्स थे, ओले के साइनिंग्स मोरिनियो वाले साइनिंग्स. ओले इवन आल्सो अडॉप्टेड साइनिंग्स फ्रॉम डेविड मॉयज एज वेल, राइट, वान हाल एज वेल, राइट. तो ये साइकिल चलते आ रहा है भाई. दैट्स व्हाई आई से अगर एक मैनेजर को ला रहे हो उसको 2-3 साल रखो, तभी पता चलेगा किसको रखना है किसको बेचना है. 2-3 साल इज एनफ टू एक्चुअली रिमूव योर डेडवुड फ्रॉम द स्क्वाड, जो यूनाइटेड कभी कभी नहीं कर पाई है, राइट, राइट. एज बाय यूनाइटेड प्रेशर इज टू मच टू बी ऑनेस्ट. डोंट नो हु माइट फेल, बट यू आर एक्चुअली बैकिंग डॉना ना ऑल द टाइम. मेंटालिटी तो ओनाना में भी है नहीं. अगर मेंटालिटी होता ना, ही वुड हैव परफॉर्म द सेम लेवल्स. इंटर में उसको 1-2 सीजन अच्छे रहे हैं एंड दैट वाज इट, बिकॉज़ ही वाज दैट वाज हिज पीक एज अ प्लेयर. उसके बाद इट कंप्लीटली ड्रॉप्ड, राइट. मेंटालिटी वही होती है कि आप यू डू द वर्क एवरी डे ऑफ द वीक, नो मैटर व्हाट. Reports are coming in, so we are working to convince him. I know Barcelona is definitely willing to sell players, but uh, Casado bhi hai 60 million market pe, so we'll see, man. Even Eddie Howe has 5 million buyout clause. वो ये गलती हम कितनी बार कर चुके हैं, man. You remember the Dan Ashworth thing, right? I don't know, man. I don't know. ग्लासनर सही. ग्लासनर has proven it in the Premier League. मैं definitely ये तो बोल सकता हूँ for sure कि ग्लासनर definitely can work out मेरे हिसाब से, right?
Bro, do you feel Amorim is too stubborn regarding tactics? Yes, Manishankar, thank you so much for the comment. Hope you like the stream. Hope you subscribe to the channel as well. Regarding tactics, results नहीं आने पर भी system change नहीं कर रहा है बंदा. The tactics are absolutely looking flat. It's flat as ever. It's not working out, right? And rival managers and players have figured it out. Press conference में आराम से बोल रहे within few minutes. वो बंदे को चेंज करना पड़ेगा. तुम 3-5-2 खेलो ना, अगर 3 in the back खिलाना है. Get some more guys on the midfield. तब आप मेनू को भी खिला सकते हो, ब्रूनो को भी खिला सकते हो, and play a register as well, right? Why have United not sold Ugarte and go for better DM? Uh, Ugarte could be trusted, but वो is the same player that grew under Amorim as well, right? उगारते को खेलने के लिए उसके साथ एक अच्छा पिवट मिडफील्डर चाहिए, वरना उगारते इज नॉट गोना वर्क. बट आई एग्री, ही हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट इन माय ओपिनियन. If you see Crystal Palace, they play like how United should play with the current available crop. Absolutely. And the reason is they have Adam Wharton to actually release the pressure from the midfield. अपने पास वो प्लेयर नहीं है इस टाइम पे जो डिक्टेट कर सके गेम फ्रॉम द बैक. आई एम ऑल Amorim in. If he leaves, I haven't lost all hope. मैम, फॉर मी, मैनेजर तो आते जाते रहेंगे, प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, बट एज फैंस वी शुड डिमांड मोर फॉर द क्लब. गुस्सा इज स्मॉल वर्ड फॉर मी. फुटबॉल वाज माय एस्केप. एंड फैन भी हुआ तो किसका, मैनचेस्टर यूनाइटेड का. आई जस्ट वांट द डोमिनेट यूनाइटेड बैक, नॉट एडी हाउ. वी आर यूनाइटेड, नॉट न्यूकासल. एब्सोल्युटली एग्री. एब्सोल्युटली एग्री भाई. एब्सोल्युटली. फर्मिन कैनॉट हैपन अनलेस जैक्सन इज सोल्ड परमानेंटली. तो जैक्सन तो लोन डील हो रहा है, तो कहां से होने वाला है? इट्स लुकिंग मच मोर डिफिकल्ट, राइट? The problem with Glasner is the same system. Otherwise, he's one of the best managers. Yeah, exactly. I mean, अगर ये फॉर्मेशन पे स्टिक रहे तो ग्लासनर. बट विद द करंट कॉप अप प्लेयर्स, अगर लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट? लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एमोरिम छोड़ देता है या सैक हो जाता है, राइट? और इस सीजन को अगर आप लोग को बचाना है, देन जस्ट गेट अ मैनेजर हु इज गोना प्ले 4-3-3 नॉट जस्ट दिस सीजन, द नेक्स्ट 3 or 4 years, और उसको चांस दे दो. देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स. आज अगर एमोरिम छोड़ के चले जाता है, राइट, the brighter side of this the thing is that अपने पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जो 2 प्लेयर्स हम लेके आए हैं इन Matheus Cunha and Mbeumo, right? They can actually fit in many systems, right? So this is good. The current crop of players that we have actually are better for a 4-3-3. अगर Amorim आज sack हो जाता है, then you should only get a manager who plays 4-3-3 या 4-2-3-1, right? जो proven formations है. अगर एमोरिम को भी बेच के ग्लासनर लेके आते हो, ये सेम प्लेयर्स है भाई. दीज आर द सेम प्ले क्रॉप ऑफ प्लेयर्स दैट विल टेक यू टू द डिसअपॉइंटमेंट रोड rather than the country road, right? Building a project with back three at the manager and all players is always going to be difficult. United are stuck really bad. No, I agree. I mean, we're in a spot right now. If this squad does not improve in the next few game weeks, I don't know what we're going to do. But that's what the brighter side is. इस फॉर्मेशन के बेसिस पे players were not signed at this point. The players we still have are still the players that we had since Tenag, and barring few more changes, right? Are we are underestimating United pressure. It's just too much, to be honest. Don't know the strongest of the strongest might fail, so I can't guarantee 100% in Donna. मैं तो किसी भी प्लेयर पे गारंटी नहीं कर सकता ना. मिस्टेक. नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. If Baliba would have come to United, तुमको क्या लगता है Baliba would have worked 100%? आप गारंटी दे सकते हो? You cannot give that guarantee. You cannot give that guarantee, guys. You cannot. Whatever has happened with the transfer window for Man United, you cannot give that guarantee. हो ही नहीं सकता. It cannot happen. I cannot trust any player until I've seen him performing at least for 1 to 2 months. You remember when Mazraoui was signed initially? The vibe was so good that Mazraoui, मैंने खुद ये statement कितनी बार बोली थी, right? In other streams, when I was panels on other streams as well, right? कि भाई Mazraoui can absolutely go and fit in any team. No, it's not the case. No player in Man United can actually start on any top teams right now. A team who finished 15th, it is what it is, भाई. रोहित इज या, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट. लाइक कर दो स्ट्रीम. आई डोंट नो कितने लाइक्स हो चुके हैं, मैं चेक करता हूँ एक बार. लाइक कर दो स्ट्रीम गाइस, एंड होप यू आर ऑल डूइंग वेल. 36 लाइक हो चुके हैं. 4 मोर करा दो, 40 लाइक्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वोल्टेमार्ड इज नॉट ओवररेटेड, ही इज ओवरपेड. मैंने वही बोला ना, ही इज नॉट ओवररेटेड एज अ प्लेयर, ही इज ओवरपेड. तभी मैंने तो वो पोल पे क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन अबाउट व्हेन यू से द स्टेटमेंट ओवररेटेड, राइट? West Ham should get should yeah, West Ham is
के पास जो बचे हैं वो भी नहीं रहेगा. आई थिंक लुक पैकेटा उनके पास है, जैरेड बोवन है. दे माइट ऑल जस्ट लीव नेक्स्ट सीजन, राइट? They signed Todibo, they signed Fulkrug. These players are gone. Todibo is not good enough. James Ward-Prowse is only for good for set pieces. Ball progression, defensive activities है ही नहीं. Suchek is not good enough, right? West Ham is gonna go, man. They're gonna relegated, right? But they need to do something on the transfer window soon. Arey, hi on football. Utkarsh is here, bhai. Thank you so much for joining. Xavi to Spurs. Here we go, bhai. We are coming for cups. Fantastic signing. Fantastic signing. Chelsea missed out. It's a good thing that even after you lost Eze and Morgan Gibbs White, देखो agreement की issue नहीं थी with initial agreements if you think about it, which means Spurs still have the pull in the transfer market, right? And because of that pull, Xavi actually chose Spurs to play Champions League football and also week in week out because you know, right? Madison and Kulusevski, they're not fit anymore. Kulusevski का return कब we do not know. And Xavi Simons, if he comes and stamps it authority, वो intensity भी तो देने वाला है. Xavi Simons is also going to provide that intensity to Spurs as well. We need to all understand that. He is very versatile. He can play in the left wing, he can play in the cam, like two striker mode में भी खेल सकता है. He fits in a lot of places. So it's a fantastic signing in my opinion, and big up to Spurs, man, for doing this. Forest might not go for Mourinho, but don't know how the egos of Marinakis and Jose will work out. Maybe it will won't, maybe it won't. I don't think so. Nuno will leave, man. It's a disagreement. A manager that has stabilized Nottingham Forest. Do you think the owner is that dumb ताकि वो sell कर देगा? Like absolutely like sack the manager because of a personal disagreement. I don't think so that's happening. But who knows भाई. जो एम्बूमो का मेंटालिटी लैक कर रहा था, डर है वो टूट ना जाए. नहीं 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 टूटेगा. आई नो एम्बूमो, नोइंग एम्बूमो, राइट? एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? When Ivan Toney was banned for betting, right? Embumo was became the talisman of Brentford, right? Along all the lows that were happening around Brentford, he took up the mantle, improved other players. आपके शाडे हो गए, आपके विसा हो गया. Wisa and Embumo combined at 40 goal contributions for Brentford last season. Brentford के लिए he stayed fit as well. He tracked back. He was everywhere. I think he's gonna do well at United. एक गोल हो चुका है ना इस वीकेंड को. This penalty misses are nothing. We rarely even see Embumo missing penalties for Brentford as well. I have full confidence in Embumo. In my opinion, it's gonna work out. Cunha is almost 100% mentality for me. He has that. He will do great. But Embumo is so shy guy. I'm so. It's not about being shy. Right? It's about maintaining your standards. It's about being calm in situation. Embumo is a pretty calm player. अगर वो calm नहीं होता उस दिन वो गोल आता भी नहीं. While others were struggling, Embumo remained calm and slotted that goal on the bottom left corner. Right. So I am completely trust in Embumo because he has proven it in the Premier League for the past 2 seasons. If Jose signs for Forest, then I can see a fist fight between him and Marianakis on the pitch, like Vikings. भाई Vikings में एक था the king Marianakis, right? It's going to be a Viking fight between uh, Nuno Espirito Santo. But Nuno is a fantastic manager. I don't think so. He's going to leave. Bhai. I don't think so. He's going to leave. Jared Bowen won't leave West Ham since his father-in-law owns the club. But if the father-in-law gets a good bid, Ronin, and I've said this before, Ronin, and let me know what you think. I have said this so many times about United. If you actually need a good backup to even Embumo or Cunha, like Jared Bowen is the best guy for you right now. Considering the fact that Bowen might not have that demands of starting every week, that because he's coming from a struggling West Ham squad as well. Bowen will be a fantastic asset. Regularly scored. I think he had 18 goals and assists last season in the Premier League. 12 goals and some assists, like 8 goals and some assists, like 12 assists or something like that. So he's a fantastic player, bhai. He's a fantastic player. So I always considered him as one of the options for United for any formation, be it tens, be it the right wing situation, right? But out of contest question, how do you see Chelsea matches in the UCL? Bayern Barca के against कुछ chances हैं. Definitely chances हैं. I definitely see Chelsea as a very, very good contender for the Champions League this season. They have a very good squad and a fantastic midfield duo of Enzo and Caicedo. If they stay fit,
sky's the limit. Why? If Palmer produces those numbers that he produced last season and the season before, I see at least Chelsea going to the quarters this season. And against Bayern, it'll be very difficult. Barca is looking a bit flat in the defensive side of things, but it's going to be an interesting game, man. In all honesty, UCL का review तो definitely करेंगे, weekend पे भी बात करेंगे. I need to check out on all fixtures in my all honesty. Nuno might get West Ham's job, Potter का पत्ता साफ होते ही, but West Ham के पास वो players नहीं. I think West Ham is a club in doom. They're going down. कोई कोई भी मैनेजर आके right now cannot save West Ham. The center backs Kilman and Todibo have been absolutely shit. Absolute shit. मेटल बोल रहे हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ नॉट क्रिएटिंग इनफ चांस फॉर सेस्को मेक्स मी वरी ही विल एंड अप लाइक हॉयलैंड. प्रॉब्लम ये है ना कि सेस्को शुड हैव बीन प्लेइंग अप फ्रंट, अप टॉप, राइट? But he was exactly doing the same job as Matheus Cunha. So it's a confusion in tactics that's going on with Sesko. Dorgu cross nahi kar raha tha because Sesko was not on up top, right? Sesko needs to be the target man for United. जब तक वो नहीं बनेगा, it's going to be very very difficult. It's going to be very difficult for Sesko to flourish if he still drops deep a lot. Don't drop deep. You have Cunha and Mbumo to do that. Potentially Zirkzee to do that. Stay as a target man, focus on scoring goals and finishing. अगर उस पर फोकस करता ना, we would actually saw him score goals. Now he's feeling underconfident because he does not know what to do right now. And I'll blame a little bit to Amorim as well on this one. बोवन लाने के लिए बहुत माउंट एंड जर्सी को सेल करना होगा. माउंट को आई कैन सेल माउंट if I have to get Jared Bowen any day. And kal Zirkzee played like water on pitch where the pitch was full of water. Zirkzee was looking good when he came in, and Zirkzee needs to be given time. The one player that I am excited to see is the Zirkzee and Cunha partnership. Zirkzee, Cunha and Mbumo partnership is looking very exciting, in my opinion. You know what? I would rather start Zirkzee against Burnley from whatever I saw in that Grimsby game. You know, bench Mount at least, but I don't think so. He's gonna bench Mount. I don't think so. He's gonna bench Cunha and Mbumo as well. So I think we most probably gonna see the same lineup, right? Yes, guys, exactly. Join Discord, join kar lo. I see a lot of new members in the chat. Definitely do join the Discord server. We're gonna Discord jaldi join kar lo. It's better for you because memberships khulne wali hai. Jaldi, right? Jaldi khulengi. So stay tuned, guys. Mbumo is a leader in a team, but not a keen or Cantona type of leader. But Cunha is that. So I just wish Mbumo keeps his confidence and comes back. Fair enough. He'll do. He's a leader in the team, man. He's definitely there. एक बार FPL दिखा दो. FPL दिखाएं क्या? Then we'll close the stream. FPL दिखा के let me close the stream. लोगों Fantasy Premier League को जाता हूँ. We are playing Fantasy League on Ashtox Football as well. So मैं जाता हूँ कहाँ है Leagues and Club का, ठीक है? मैं उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है? Let me share the screen, ठीक है? और अपना वो प्रेडिक्शन वाला लीग टेबल भी वो दिखाएंगे, मैं कम्युनिटी पे डालूंगा कृषानो उसको. I'll put that on the community. बट अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फैंटेसी प्रीमियर लीग का दिखाता हूँ अपना क्या चल रहा है. राइट फैंटेसी लीग का क्या चल रहा है. लेट्स टेक अ लुक. लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस वन, ठीक है? फैंटेसी लीग मैं कौन से फॉर्मेट पे लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ इसको. हाँ, ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है? ऐसे देखते हैं. चलो अभी कौन है? मिनी पैक XOX जैक्स रेज इज लीडिंग द लाइंस. कितना? 157 पॉइंट. उसको कितने थे? 62. ही हैड राया, गैब्रियल, राइट? उसके पास राया, गैब्रियल एंड काफी लोग थे, राइट? गैक्पो था वो. हुआ पेड्रो, हालैंड, कैप, वुड. बेंच में बेंच इज लुकिंग वीक बट पेट्रोविच उसके साथ है. काइसेडो 8 पॉइंट्स, राइट? काइसेडो 8 पॉइंट्स. डैम. गोल्स भी स्कोर किया था, राइट? ही स्कोर द गोल एज वेल. ओके, फेयर इनफ. अगर मेरा आप लोग टीम देखोगे, राइट? I had Calafiori in me. Reinildo में रखा था last week because of the performance, but Palmer is gone, so obviously um, captain मेरा Palmer था, but I think it went to Salah because uh, उसका एक assist ही था बस, right? So that's why I scored 10 points, right? So मेरा था 58. I am currently in this league. मैं अपनी league की rankings दिखा लेता हूँ, right? And we'll see, right? मैं काफी सारे leagues में हूँ अभी, but इसमें कौन? कनिष्क. केवी रिएक्ट is second. केवी रिएक्ट का टीम देखते हैं, कनिष्क का टीम देखते हैं एक बार, राइट? कनिष्क का टीम देखते हैं, बट कमेंट्स भी लेते हैं. Yes, Sesko often dropped deeper in Leipzig system over the last two seasons,
coincided with slight dip in his goal scoring form. However, he flourishes most as a frontline striker. Exactly the point, Kuvar. Thank you so much for joining in the stream. Hope you like the stream. That exactly same point मैंने mention किया था, right? If Cunha and Sesko is gonna do the same thing, right? How it's gonna work out? It's not gonna work out, right? So having said that, अभी केवी रियाट्स का टीम देखते हैं. He's on second place. He's doing fantastic in all the leagues, भाई. Look at this. Whoa. He's top everywhere. Damn. Okay, he had Gabriel, Sar, he had Rogers, Gakpo, Haaland, Pedro captain रखा था, right? He had Pedro captain and Vanderman, right? But next week it's going to be a tough one, right? Next week, game week, is going to be really, really tough, right? अभी अपन अगर किसके टीम पे जाएंगे, योंको भी है अपने पास. स्वयं का टीम देखते हैं, राइट? 82 पॉइंट्स, डैम. पिकफोर्ड 15, सार, हुआ पेड्रो, इवानिल्सन इज अ गुड चॉइस. यू नो व्हाट, ही इज गोना स्कोर दिस वीकेंड, मैं तो बता रहा हूँ. साला इज देयर. साला कैप्टन भी रखा था. फेयर राइंडर्स, right. I think Stan Larsen Aya from the bench, I think, for Palmer. But it's a good, looks like a good team, man. All these will, at least these three will definitely score a lot of points, and Pickford is a fantastic goalkeeper. Pickford is a fantastic goalkeeper, guys. Good stuff, भाई. Mystique भी है भाई. Mystique का भी देख लेता टीम. Um, okay, Sanchez है. Tarkowski is a good choice. Van der Ven is a good choice. Bisaga is a L choice in my opinion. Reinders is a good choice. Mitoma will not produce you crazy numbers. He will not produce you crazy numbers, bhai. But Joao Pedro is a fantastic choice. Bruno Fernandes, I think, since he's playing deep, I don't think so you should even take in Bruno Fernandes. अगर यूनाइटेड प्लेयर से डाल दो तो कोनिया एम्बूमो डालो. इन लोग दे माइट एक्चुअली स्कोर यू गोल्स, भाई. दे माइट एक्चुअली स्कोर यू गोल्स. अभिजीत का भी टीम देख लेते हैं. कृषाणु तू कहाँ है भाई? वेयर आर यू कृषाणु? कृषाणु किधर? हाँ, इधर है. चलो कृषाणु का टीम देखते हैं. ठीक है. We'll check Krishanu's team as well. 15 people in the stream, guys. Thank you so much. Wilson Kerketa. Arey, Wilson bhai, thank you so much. Ashish, great to see you doing this. Proud of you. Just to ask you off topic, what Eze can contribute to Arsenal? Thank you so much, Wilson bhai. He's one of my college seniors, bhai. Thank you so much for joining. I really loved you join the stream. Eze can contribute. Eze, I have made a video, a detailed analysis video, Eze to Arsenal. You can go and check it out on my channel. In 6 minutes, I've packed in all the information that you want. But Eze to Arsenal, he's a fantastic player, Premier League proven player, FA Cup winner, right? And my and actually he might work out at Arsenal because Arteta would like that central compactness, control, right? And Eze can actually move in from the left half space into the center and link up with Gyökeres, right? But my problem is that, will that, like, Declan Rice and how Eze might actually sync up in that box to box role. Like if Declan Rice is also going to make the same runs, and how that sync is going to happen with Eze, sometimes that's the thing that worries me a lot. But definitely, bhai, thank you so much. Hope you join our Discord server as well, bhai. I would really appreciate, and hope you are subscribed to the channel as well. Soon will be 1,000 subscribers, but really, really happy to see you. Long time, bhai. Long time, Wilson, bhai. Long time. But I think Eze, from a player POV, is gonna work for Arsenal. 100% is gonna work for Arsenal. Mentality is there. He's won the FA Cup. He has proven time and time again that he can do it week in, week out. And I would have wished that Eze would have been much more central in Arsenal. I would have been excited to see his link up with Saka, because the fact that Eze has linked up with Olise before at Crystal Palace. So that sync was fantastic. You can see it all in that video. I've mentioned this, but thank you so much for the comment. Exactly. Eze wala video, the link is right here in this. Thanks, Krishanu, for doing this. But I'll take more comments as well. But Krishanu, I don't know what changes you might want to make for this season, but Patrick Dorgu is something that you do not want in this team, man. You need to go. Milenkovic is a great option. Anderson will not provide you more numbers in goals, but you might need to get more attacking midfielders. Reinders you can keep because he might score, but really appreciate, man. But it looks like a decent team, but it needs more work, right? I'll FPL ka table I'll put on the community so that everyone can watch it, right? I'll take few more comments and definitely then I'll close the stream. For example, Thomas Frank used the same 11 for that Bing Ange, lost 4-1. Okay, yet Frank hasn't conceded a goal. Amorim has to take some. Absolutely,
If a manager has come in and transformed Spurs within 3 games and the preseason, right? And it's been 10 months that Amorim is not able to do it. We cannot just keep on questioning the players always as well. Some accountability needs to happen on the manager as well, right? Right. We might do a surprise signing in the midfield before the deadline. What is your take regarding the same? Also, we all know that we'll have on eyes on tomorrow, and tomorrow exactly live watch along hone wala and Ashtox football. We're gonna have a lot of fun, but a lot of talk as well. If United does not play as well, um, Garnacho upfront पैसा तो आया है. See, Garnacho upfront पैसा तो आएगा. We will we be able to use that money to the right midfielder? I know Agume is there, but these are young project players. We needed someone very proven, and we have no time. Ederson ko bhi jayenge. It's gonna cost us way big because of the situation right now. We are stuck, in my opinion. I don't think so. We are making any signings, and I'm so surprised we still let go of Toby Collier. We still let go of Toby Collier, guys. Even after our midfield looks so. अगर try भी नहीं कर रहे हो कोई Toby Collier को, it's fine. He is not even trusting Kobbie Mainoo. He's not gonna play in the weekend. I'm telling you, man. I'll change Palmer right now. I think everyone is gonna change Palmer. You know, I might actually go for a very underrated take on this game week. Is मैं reveal कर रहा हूँ यार क्या I think other people should win my FPL league. Dango Otara. Dango Otara को लो guys. Brentford is in good form. Get Dango Otara. They're playing. Brentford कौन खेल रहा है इस टाइम पे? I think Brentford is playing. रुको Brentford कौन खेल रहा है Brentford? I think they have a decent fixture. I think they're playing. मैं बता रहा हूँ आप लोग को. Brentford is playing Sunderland, guys. So Dango Otara लो आप लोग. Cheap आएगा 6 million option है. You'll save 9 million and actually get a -4 and do Haaland for Brighton. Right? How was the team studying till now? How was the team was studying till now? How was the team? Or the team कौन सा FPL का बोल रहे हो तो FPL का definitely I'll post the leaderboard. You can all see it. The thing Amorim said, it's answer the team is what is missing. The team is missing a midfielder, man. हाँ बहुत चेंजेस करना है टीम में. होल्ड योर हॉर्सेस. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वाइल्ड कार्ड खेलना. दैट्स द बेस्ट टाइम टू प्ले इन माय ओपिनियन. इंजरीज के बाद मैं आपसे 3 खिलाऊंगा. एग्जैक्टली प्ले 3-4-3 एंड ऑल 4 अटैकिंग मिडफील्डर्स एंड बैक 3 में ना प्ले विंग बैक्स. दे आर मोर they are they will provide you more points than center backs, right? My opinion to you all would be Gibbs White और एलियट एंडरसन. ये दो में से अगर कोई सेंटर अपने अपने पिवट पे आ जाए, इट्स गोना वर्क. एलियट एंडरसन इज द वन दैट आई बीन सेइंग. आई मेड अ वीडियो ऑन इट एज वेल, राइट? मैंने उस वीडियो बनाया था. एलियट एंडरसन इज द प्लेयर दैट वुड एक्चुअली फिट मैन यूनाइटेड इजीली. और 50-60 मिलियन के प्राइस पॉइंट पे आ जाएगा जो हमारे पास है. If we had 90-80 million to spend for Believer, we had 60 million for Elliot Anderson, and then go for a 25 million Hackney or Agume. Spend 80 million wisely, guys. मैं इतनी बार बोल चुका हूँ. ब्रूनो हटा के नहीं. हाँ, सार फ्रॉम पैलेस ला सकता है. सार विल बी अ फैंटास्टिक चॉइस. Absolutely nailed on, भाई, nailed on. Bruno मत लाओ. Bruno right now in this team might only just score in penalties and set pieces, or maybe the odd goal. Since he's playing deep, rather to Cunha or Mbumo lea, if you feel that we might actually score against Burnley. I played 3-5-2 till now when Bissaka was on bench. Go for a 3-4-3 always, man. Go for a 3-4-3. So that's the stream, guys. Tomorrow, if people are watching, 16 people watching right now, I hope you like the stream. Like the stream, guys. If you have not done it yet, 37 likes हो चुके हैं और 3 more है तो 40 अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे. Tomorrow it's gonna be Man United versus Burnley का watch along, 3-hour mega watch along. It's gonna be fantastic. To chime in, it's gonna be great. Sunday को भी लिवरपूल एंड आर्सेनल का वॉच अलॉन्ग करेंगे. राइवल्स वॉच अलॉन्ग इज आल्सो गोना हैपन ऑन एस्टॉक्स फुटबॉल. मंडे को स्ट्रीम होने वाला है गेम वीक रिव्यू along with सूरज एंड लाला. So that will be a fantastic stream. So Monday को भी definitely आना. And I think Tuesday or Wednesday I'm going to Lux channel for a stream. And next week a lot of collabs are coming on the channel as well. So stay tuned. A lot of stream are gonna happen at Ash Talks Football. Soon gonna reach 1,000 subscribers, and hopefully with
all the streams that we are doing right now, and a lot of videos are coming next week. So एक अच्छा video बना रहा हूँ आप लोग के लिए. You definitely good for definitely you will definitely like those videos. Good news for India. I think Tajikistan lost. Oh, did they? What was the scoreline, man? एक पाल्मर ग्योकरेश और एक पाल्मर तो नहीं खेलेगा. पाल्मर इज आउट ऑफ द. ओ ग्योकरेश यू वांट टू सेल. Keep Gyökeres for Liverpool. Liverpool is looking susceptible in the defense. Keep Gyökeres. But Palmer you need to sell. Palmer is out of game week 3. It's already confirmed. It's already confirmed. 2-1. Finally, they scored goal, man. Finally, Indian team scored goals. One will be Palmer for Gyökeres. And another one suggestion. ओके पाल्मर को सेल करके ग्योकरेस ला रहे हो फैंटास्टिक. ब्रूनो का सेल करके सार ले आओ. इट विल बी फैंटास्टिक. एक और ऑप्शन है एंडोए. नॉटिंगहम का एंडोए इज आल्सो डूइंग वेरी वेल. सो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो. वही तो बोला. पाल्मर सेल करके ग्योकरेस लिया एंड देन गेट अगर -4 खेलना ही है तो ब्रूनो सेल करके यू गेट एंडोए को ला या फिर डैंगो उठारा. ट्रस्ट मी इज गोना वर्क. ट्रस्ट मी इज गोना वर्क. वापस आना स्ट्रीम में मेरे को बोलना. मिटोमा रख. मिटोमा यू शुड कीप इट. ही माइट स्टिल प्रोड्यूस यू. ब्रूनो अगर मिटोमा सेल करके इफ यू आर एबल टू गेट डैंगो उटारा और एंडोए देन आई थिंक यू शुड कीप ब्रूनो. अगर पैसा नहीं है देन सेल ब्रूनो इन माय ओपिनियन. दैट्स व्हाट आई वुड से डेफिनेटली. राइट. मिटोमा सिटी के साथ कर सकता है. He can still score. City defense looks susceptible. So yeah, man, this was the stream. Thank you so much for joining, and it was good to see one of my seniors in university join the chat as well. It was refreshing to see fantastic things happening on this channel. 3 months में we have crossed 700. कितने subscribers हो गए भाई मेरे? 711 थे. अभी कितने हैं? We are right now at 711 subscribers, guys. 1000 hopefully. The road to 1000 is absolutely on. A lot of streams are coming on Ash Talks Football. Thank you so much for joining, guys. This was a good fun stream. Transfer वगैरह बात किए, and it was good chatting with everyone. Hope you all do well. Hope you're doing well, and hope you have a great weekend. And कल stream पे आना Man United versus Burnley watch along, guys. सार और एंडोए डिफरेंशियल जाएगा तो एंडोए जाना बिकॉज नॉटिंगहम इज प्लेइंग वेस्ट हैम यूनाइटेड. So West Ham is not in form. Crystal Palace is playing Aston Villa. So that might be a bit tricky. मैं तो एंडोए जाऊंगा, but it's up to you, man. Sar might actually go and score, right? So that's the stream, guys. Thank you so much for joining. Like the stream if you guys have not liked the stream yet. I would really, really appreciate. If not, thank you so much. This was Ash Talks Football. See you tomorrow and see you on Sunday as well. Bye bye.